Yes, guys, I'm back. Hello, Yes, Priya. uh, ma'am. Just want to ask you one thing. Yes. See, 15 days before I have registered with Zerodha for algo Mm-hmm. trading. Okay, I didn't do algo, but I was just trying. I have never done till now. I was doing algo trading, but I was doing manually whatever I was sharing you screenshots. Okay, but Mm-hmm. my question is like, I don't want to do in Zerodha, but my account is active and I have registered for Upstocks also. I mean, they both are different brokers. Okay, Mm-hmm. but if one API key is generated for Zerodha first, नहीं and the नहीं, the second API one. की you are generating, you can use for any account. आपको बस TradeView पे वो API की डालनी है. आप किसी भी अकाउंट के लिए यूज कर सकते हो. आप जितने मर्जी अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो. आप जब अकाउंट एक्टिवेट करोगे, आपको बस उस ग्रुप में जो अकाउंट आपका अकाउंट नंबर डाल, जो अकाउंट आपने डाला होगा, बस ट्रेड उसी ग्रुप में होगा जो ग्रुप नेम आप TradeView को दोगे. एंड यू डोंट नीड टू, यू कैन यूज वन API की फॉर एनी अकाउंट. लाइक अगर हमने ग्रुप बना दिया अपस्टॉक का भी हाँ, और इसका लाइक तो उसका डबल जनरेट करना आपने पड़ेगा. दो ग्रुप बना दिए. एक में आपने जीरोधा का अकाउंट डाल दिया, एक में आपने अपस्टॉक का अकाउंट डाल दिया. तो आप जो ग्रुप नेम यहाँ पे दोगे ट्रेडिंग व्यू में, जहाँ पे मैं अभी आपको सेटिंग में बताऊंगी कौन सी जगह पे आपने ग्रुप देना है. अगर यहाँ पे आप वो जो ग्रुप नेम दोगे, बस उस ग्रुप के अंदर जो अकाउंट होगा उसी ग्रुप में आप, उसी अकाउंट में आपकी ट्रेडिंग होगी. नो, माय क्वेश्चन इज ये दोनों जो ब्रोकर्स अलग अलग है उस दोनों का हम कंबाइन एक ग्रुप बना के नाम दे सकते हैं क्या, लाइक हाँ हाँ, एंड एनी लास्ट. ग्रुप में आप एक से ज्यादा कितने मर्जी अकाउंट डाल सकते हैं. नॉट ठीक प्रॉब्लम इन दैट. तो डिफरेंट आपका दो. ब्रोकर्स तो भी चलेगा. हाँ, अगर आपने एक ग्रुप में डिफरेंट दोनों ब्रोकर अकाउंट डाल दिए तो व्हाट विल हैपन, व्हेनेवर द सिस्टम विल टेक अ ट्रेड, सिस्टम विल टेक अ ट्रेड इन बोथ द अकाउंट. मतलब साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे एग्जीक्यूट हो जाएगा ना ट्रेड. यस यस और तो यस फिर यस. अगर हमने ग्रुप बना दिया दोनों का एक साथ तो फिर से हम रिजेनरेट करेंगे एपीआई तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाता है ना. आपको एक ही एपीआई आपने एपीआई. ग्रुप बनाने से पहले भी जनरेट कर ली, चाहे बाद में कर ली, आप कभी भी आप ग्रुप में कुछ भी करो, एक ही बार जो आपकी एपीआई बन गई है ना, दैट एपीआई की विल वर्क फॉर एवरीथिंग. नो नीड टू रीजनरेट ओके. द. ओके मैम. ओके मैम. वन मोर क्वेश्चन. आपने जो मैंने आपका यूट्यूब का एक वीडियो देखा था उसमें आपने 3 बुक्स सजेस्ट किए थे. वो जो लैंस का वाईटीई प्राइस एक्शन जो था ना मैम बुक. वॉल्यूम मुझे 6. बाकी के. हाँ, मुझे बाकी के तो दोनों अमेजोन पे मिल गए. बट मैं ये ढूंढ नहीं, वो नहीं पा रही हूँ. amazon पे नहीं है, वो अपनी साइट पे खुद सेल करते हैं. द लेंस दैट बुक यू विल गेट ऑन हिज ओन साइट. तो आप उनकी साइट पे जाइए. अगर वो आप ट्विटर पे देखेंगे, ही इज दैट गाय, ही इज ऑन ट्विटर, तो ही हैव देयर ओन वेबसाइट. एंड इफ यू गो ऑन हिज वेबसाइट, ही सेल दैट बुक बाय ओन. तो आप उनके वहां पे जाके आप कर सकते हो. और आप उनका एक ब्लॉग है, आप उनके ब्लॉग को फॉलो करेंगे तो उस ब्लॉग पे he share very good content on price action every day. And he have some free ebooks also on that, on his blogs about the price action. And that is really good. If you read that blog, and that you will it will help you to understand the price action very good, because I follow him and I read his almost all the ebooks, free wali bhi or paid wali bhi. And it helped me to हाँ मैम. understand the price action very good. आपने आपने उसमें भी बताया था कि आप उनको फॉलो करते हो. बट सी द थिंग टिल नाउ आई एम फॉलोइंग सो मेनी पीपल. बट जब से मैंने आपसे अटैच मतलब ये कर लिया है ना तब से मैंने Hmm. सबको सब्सक्राइब किया है. आई एम जस्ट ओनली फॉलोइंग यू ओनली. बट मुझे अभी किसी और का मतलब ये नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए टू कैसे टाइप का ट्रेड करे. आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन योर स्ट्रेटजीज एंड ऑल दैट. वन That मोर is क्वेश्चन okay. मैम. यू हैव Yeah. one more question, ma'am. I'm very familiar to Camrilla. I'm very much familiar to Camrilla, I can say. But आपका जो फिबो का है स्ट्रेटजीज, आपका जो इसका है टीमा डीमा का है एंड वन मोर डिमांड एंड सप्लाई का है, ये आपने 4-5 सेटअप दिया है. बट Mm-hmm. कैन यू टेल मी एक्सपीरियंस विच वर्क्स मोर मतलब See, if you अच्छा are very रिजल्ट कौन सा. familiar to Camrilla and if you are comfortable to Camrilla, I'll suggest you to brush up your skill in Camrilla only and try to be more perfection in Camrilla only and work only on Camrilla. क्योंकि जो setup आपको समझ आ रहा है, जो setup आपको profit दे रहा है, तो just brush up and make your perfection in that setup. Then if you want to learn Tima Dima and all, you can go for that. Right now, if you are for the Camrilla, go ahead with Camrilla and brush up your skill and brush up yourself, and only in Camrilla and EMA combination only. Hello, ma'am. Yes.
Ma'am, I have seen that most of your doing trades on supply and demand zone only, right, No, ma'am? no, 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 nothing like that. My most of the trade are Camrila only, but I do take care of the important levels while I'm taking the Camrila instead of waiting for R3 or S3 breakout. जब मैं proper target का wait करने की जगह, I generally book or trail my profit from important zone. So I make the combination and mixture of that. Yeah, ma'am. And the question here is like when if you are taking so like example, if you're taking on any demand or supply zone, so if that any of the candle or if you are getting any crossover over that particular demand zone, we are taking the trade over that. You have shared so many times in the Telegram also. So if we have either we have to wait for the target or SL, right, ma'am? So in this Right. case it is not going to the target also. So in between it got stuck means like how can you we trade? We have to keep our SL to So the it generally अगर stuck हो जाता है तो after some time you have to wait. Sometime it always touch the target. Otherwise the trade will get square over. 90% यही होता है कि आपका target hit हो जाता है. Sometimes it take time, 1 or 2 hours लग जाते हैं. So you have to patiently wait for your target. You have to sit and patiently wait for the target. Instead of taking a new trade, we should keep in ourselves in the trade and we should wait for the target and stop loss. okay, ma'am. So the only the two things should be there, right? Yeah, Only two things. I have taken a trade. Like I have taken a trade in Nifty that might Nifty 7,500 पे मैंने कोई trade लिया and I know that my target is 750, 5,000 and so 7,000 70,550 is my target. I have a 50 point of target and the market is not touching the target and my not even hitting my stop loss, not hitting my target, is consolidating. So what should I do? I will patiently wait कि either my target will hit or my stop loss hit. Instead of taking an unnecessary trade and putting your profit into the losses or putting extra brokerage, so you should patiently wait for the target or a stop loss. And I'll give you one example. I won't take the name of her. She is part of this webinar also. She took a trade in Nifty. I given her a target. I asked her ticket. She have taken the trade. I given her stop loss. I said wait for the stop loss or your target. Then sit patiently for the trade. But her stop loss didn't hit. She just himself, she was getting a losses. What she did, she get out of the trade and she jumped into the bank nifty and taken some trade, which was not a correct trade, which was not a entry trade, but was not a not correct setup. The trade was there, but अभी confirmation नहीं आया था, confirm setup नहीं था. She took that trade and her stop loss. She unnecessarily took a losses in Nifty and unnecessarily took a loss in Bank Nifty. And then the Nifty went and hit her target. And she was asking me, ma'am, I did a mistake. So I said, you have to show patience in your trade. You have to be there. You have to either wait for your target or you wait for your stop loss. That should be there. If you keep on booking your profit unnecessarily and you keep on jumping into trade, that won't give you a benefit. You always have to stick to your setup. yeah, ma'am. And I'm always following only your setup, and it is profitable also to me. So I'm following the Camarilla plus the FIBO. I mean old FIBO. That still I'm following. So that is good. If whatever is suiting you, just you have to brush up yourself. I have 4 setup because I am जो भी मेरा setup है, I am using a 3 or 4 setup, but I because I'm comfortable with all the setup and I can easily jump to one setup to another setup because I am practicing to that. But you people are new and you people are new to the setup, so you have to just concentrate on one setup at a time and which setup is suiting you. Because some people like Camrilla, they can do for Camrilla. Some people shooting Emadema, they can go for Emadema. Some people shooting supply and demand only. So you have to take one setup which is helping you to be a profitable, which is helping you to get a which is helping you to get profit. So you have to follow that only. Ma'am, one more thing after this, no, if you have time, just can you show like how will you trade on supply and demand zone? I'll show.
No, Amit, I do trade in FIBO, but nowadays I'm trading little less in FIBO, but I do trade in FIBO. ऐसा नहीं है कि मैं FIBO को ट्रेड नहीं करती हूँ. मेरी जो FIBO की ट्रेडिंग है वो भी एल्गो ट्रेडिंग हो गई है, तो इसलिए मैं इतना उस पर मैनुअली ट्राई नहीं करती हूँ. मेरे एल्गो ट्रेड से FIBO के ड्रॉ भी होते हैं और ट्रेड भी होते हैं, और जब मेरे को होता है कि नहीं करना है तो मैं मन कर देती हूँ. पर 90% मेरे FIBO के ट्रेड होते हैं और वो एल्गो ट्रेडिंग में मैंने उसकी पूरी क्लाउड पे सेटअप कर दिया है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैनुअली ट्रेडिंग, और इसलिए मैं अपना ट्रेड शेयर नहीं करती हूँ. बट आई डू ट्रेड इन FIBO. और FIBO आज के टाइम में भी बहुत अच्छी चलती है. आज के टाइम में भी FIBO डेली प्रॉफिट देती है. और यू कैन आस्क चित्रा आल्सो. चित्रा इज यूजिंग FIBO, आई थिंक. आर यू चित्रा? Yes, ma'am, I'm using only And it's FIBO. working in this market also. It's giving you good profit. So that's why I'm planning, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, they forgot about the FIBO. वो FIBO आज के टाइम में भी बहुत अच्छी चल रही है. उसके पास आज के टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने चेंज किए हुए हैं, तो that's why I'm planning कि I'll start that series again on my YouTube channel where I will explain each and every rules in detail, so that the people who forgot about the FIBO can start and start trading with FIBO and start learning the FIBO again. तो I'm not getting time because of I got busy in one, क्योंकि उसमें मुझे सारे rules बनाने हैं, थोड़ा time taking time है, तो I'm planning in 1 or 2 days I will definitely upload the first video for FIBO on my channel. Nifty only. Bank Nifty, I didn't try. Pardon? I'm trading only in Nifty. FIBO, you asked me, right? I'm trading only Yeah, in Nifty. FIBO, Nifty और Bank Nifty दोनों पे ही बहुत अच्छी चलती है. There's not like that it's not working. It works really well. So that's why I'm planning कि एक बार I will start the series. इसमें I will share all the rules and regulation properly, so that आपके भी revision हो जाए. Ma'am, for newcomers, what do you suggest? Start with the Camilla or Timadima? Newcomers should start with Camarilla. और Dima is also good. Dima थोड़ा easy है for the newcomers. So आप अगर Dima से कर सकते हो तो that is good. But sometimes it's happened that you won't get a trade with Dima, तो इससे कई बार daily trade नहीं मिलता है. So that day you can go with FIBO. Oh, sorry, Camarilla. Camilla. Okay, thank you. Sujata, I will try to plan the trading with me, but reason आजकल 2-3 reason है जो मैं अपनी live trade नहीं कर रही हूँ. One, I want a concentration. Second, my kids are working, schools are from home only, they are not going to school. So अभी क्या होता है मेरी trading के बीच में sometime they disturb me, sometime I have to, because they take their classes, and my younger one is too young, he's just 5-year-old. So उसकी जो class हो रही होती है, he takes class with one of my helper, she sit with him, but you have to take care of that key, because he sit with near to me, जहाँ पे मेरा trading setup है उसका जो chair वगैरह मैं उसके साथ ही लगाती हूँ. Take classes, I have to take care of him that he is attending the classes, concentrating or not. So that's why I don't want कि मैं उनका हो जाए, तो इसलिए I will plan once the things get settled down, my kids starting going school and everything. Even my husband is working from home, तो अभी मेरे घर का जो atmosphere is not that good that I can do the live trade. और second, उसके साथ मेरे पास इतना सारा distraction होता है, और अगर live trade होगा तो मुझे concentration थोड़ी और भी करनी पड़ेगी. So इसलिए I am not planning, but I will plan very soon, really very soon. And I think let the corona get finished, let all of my family members should get out from the home. बिकॉज उनके साथ मेरे लिए बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया. बट आई हैव टू मैनेज थिंग्स, मुझे अपना टेलीग्राम भी देखना होता है. आई हैव टू आंसर माय फॉलोअर, माय सब्सक्राइब नॉट सब्सक्राइबर, बट आई हैव टू आंसर माय फॉलोअर्स, आई हैव टू आंसर माय वेबिनार पार्टिसिपेंट. तो बहुत ज्यादा मेरा आजकल कॉन्सेंट्रेशन 3-4 चीजों पे हो जाता है, तो इसलिए अभी मैं लाइव ट्रेड प्लान नहीं कर रही, पर आई विल प्लान सून. And trading with a 4 or 5-year-old kid at home is little bit difficult, but ठीक है, manage हो रहा है, because I have helping hand, so they are managing. So let's start, and can we continue with the tool? Yes, ma'am. So you people are clear till here that trade off time you have clear till here. That's why I always plan my Yes, ma'am. webinar on the weekend, so that my husband is free and he can take care of the kids. So this is a trade time. With the trade type, you have to select what kind of trade you want to take. You want to trade in stocks, you want to trade in option, or you want to trade in future. Stocks mean equity, cash. It will take a trade in stocks. Futures, it will take the future, and option, it will take a option trade. ठीक है?
डोंट सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर द स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक ये जो हमारा ट्रेडिंग टाइप है, जो ट्रेड लेता है वो MIS ऑर्डर लेता है, लिमिट ऑर्डर नहीं लेता है। तो स्टॉक्स में लिमिट MIS ऑर्डर की ऑप्शन नहीं है हमारे पास, स्टॉक ऑप्शन की, उसके लिए भी वर्किंग इट आउट। सो अभी स्टॉक्स पे अगर आपने ऑप्शन करनी है तो यू कैन ट्रेड, अगर आपने स्टॉक में अभी ट्रेड लेना है तो आई जस्ट सजेस्ट यू गो फॉर द इक्विटी, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, ओनली इक्विटी सिलेक्ट करिए। अगर आप उस पे ट्रेड करना चाहते हैं, क्या नाम है, इंडाइसेस पे, यू कैन सेलेक्ट ऑप्शन एंड फ्यूचर, एनीथिंग दैट इज अप टू यू। आपने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, मान लिया आपने ऑप्शन लेनी है, मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन लेनी है, आपने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया, हियर यू विल हैव टू टाइप निफ्टी, ओनली निफ्टी, ठीक है, नथिंग एल्स। हियर राउंड ऑफ मीन, अब जितना राउंड ऑफ में अगर आपने 50 यहाँ पे राउंड ऑफ डाल दिया तो इट विल सिलेक्ट द नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन। अगर आपने 100 डाल दिया, ये थोड़ी सी और थोड़ी फार इन द मनी, नियरेस्ट एट द मनी ऑप्शन ढूंढेगा। अगर आपने यहाँ पे 200 डाल दिया तो इट विल गो मोर फर्दर। तो आप जितना ज्यादा राउंड ऑफ बढ़ाते जाएंगे वो उतना ज्यादा बाहर के ऑप्शन ढूंढता रहेगा एट द मनी में, तो वो 500 मतलब वो अवे चला जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू पुट इट 50 एंड 100। अगर आप यहाँ पे 50 और 100 डालेंगे, इट विल ऑलवेज सेलेक्ट द नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस सिस्टम खुद बनाता है, वी डोंट नीड टू पुट द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एक्सपायरी कॉल बाय में इन द मनी तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो ये इन द मनी लेगा आपका, ऑलवेज नियरेस्ट इन द मनी लेगा। आप इसे 50 डालेंगे तो नियरेस्ट इन द मनी ही लेगा। जैसे आपका 17,550 है तो हमेशा 500 की ऑप्शन लेगा, ओके, ठीक है। आप यहाँ पे 50 डालिए राउंड ऑफ। उसके बाद यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर योर एक्सपायरी डेट शुड बी करेक्ट हियर, क्योंकि इस एक्सपायरी डेट के बिहाफ पे ही द सिस्टम विल मेक योर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सो जैसे अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आवर एक्सपायरी इज ऑन 16th of December. So what I will do, I will put 16 DES December and 2021. This is the format you have to follow. You have to, 1 second guys. This is the format you have to follow and you have to put it while putting the date of the expiry. आपको हमेशा अपना ध्यान रखना है कि whenever you're taking a trade, your date of expiry should be correct. Okay. So every Thursday you have to change your date of expiry for the next week expiry. Okay. API key, you have to put the API key. जो अभी हमने API की search करी थी, we have found the API key. So you have to put the API key here. Or in the manual, I have shared that key. Wherever you're putting the API key, I have shared the link where it will show you API की कैसे होता है, पर मैंने आपको वैसे बता दिया, मैं वही वाला आपको I will give you that link, that screenshot जहाँ पे मैंने आपको API की डालने की, I have teach you to put the API key. After putting the API key, you have to put the group name, जो आपने group name वहाँ पे create किया था, जैसे मैंने Camarilla group name create किया था, it will put the group name here. Exchange NSE. Quantity, if you are putting into the stocks, you can put any quantity, but if you are putting in the future or option, so you have your quantity should be round off your lot size. अगर जैसे निफ्टी का lot है 50 का, तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए 50, 100, 150, the quantity should be as per your lot size of the option quantity, ठीक है। एंट्री मल्टीप्लाई, जैसे आपको ये था 236 पे एंट्री होती है, हम 236 का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखते हैं, तो हम 240 पे अपनी एंट्री रखेंगे। 240 की अगर जैसे ही फिबोनाची का 240 लेवल टच हो, द सिस्टम विल टेक अ ट्रेड, ठीक है। उसके बाद टारगेट मल्टीप्लाई, जैसे मेरा 618 मेरा टारगेट है, तो मैंने 618 अपना टारगेट डाल दिया, इट विल टेक अ ट्रेड, इट विल पुट मतलब it will book the profit when the 6188 fibo will touch. Stop loss multiplier क्या होता है? Stop loss multiplier is that it is a gap, जो मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो इसका स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी में आपने जैसे इसके 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना है। जैसे आपने S3 ब्रेकआउट दिया तो आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट नीचे है, 61 है, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस मल्टीप्लायर में यू विल पुट द 10 पॉइंट्स। इस मीन
जो आपका एंट्री पॉइंट है, जो भी आपका एंट्री पॉइंट है, आप S3 ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हैं, R3 ब्रेकआउट पे, it will plus minus the 10 point from that entry pivot point and it will put your stop loss there. ठीक है, तो आपने यहाँ पे stop loss put कर दिया, then you have to just save as a default and press OK. ये आपकी सारी सेटिंग डन हो गई टूल की। अब ये सिस्टम रेडी हो गया ट्रेड लेने के लिए, बट उसके बाद हमें एक अलर्ट क्रिएट करना पड़ेगा तभी वो ट्रेड लेगा। बट यहाँ तक आपकी सेटिंग डन हो गई। अब सिस्टम क्या करेगा, अब सिस्टम जैसे मैंने एंट्री लेवल लाइन ऑन कर दी, जैसे ही एंट्री लाइन टच करेगा, जैसे ही एंट्री लाइन टच करेगा, इट विल टेक अ ट्रेड। ये 236 एज अ 236 ऑफ फिबो, जैसे मैंने आज आपका 236 ऑफ फिबो पे इसने ये लाइन खींच दी। At a 236 of Fibo, it is a line. So as soon as the price will touch this line, it will enter into the trade. और जैसे ही enter करेगा trade पे, it will show you this arrow. The tool will show you this arrow that as soon as the trade will enter, it means the target, the entry has been done, and this is, it will put the line at the target point. Blue line target point पे line खींच देगा ये आपका system. 180 होता है ना, हाँ. It will put the blue line on the target. As soon as the system will touch the target, it will book the profit and it will show you dot here. यहाँ पे dot आ जाएगी कि आपका इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक हो गया, and it will plot the yellow line as a stop loss. अगर सिस्टम येलो लाइन को टच करता है, जैसे यहाँ पे R4 ब्रेकआउट का नीचे इसने इस कैंडल में ट्रेड लिया था, ये हमारा टारगेट था, बट इंस्टेड ऑफ टचिंग द टारगेट, सिस्टम हैव टचेड दिस येलो लाइन stop loss. It is showing the arrow on this stop loss that the dot on this stop loss that this trade is put in the stop loss and this trade is closed. So the system will show you कि कौन सी कैंडल पे ट्रेड हुआ है, कौन सी कैंडल पे नहीं हुआ। हम इसे 1 मिनट के चार्ट पे कर लेते हैं। ठीक है, आपने जब ये कर दिया, दिस इज डन हियर टिल हियर, क्लियर और एनी डाउट? मैम एक बात था कि वो एपीआई की जो यहाँ पे देना है, वो जो एपीआई की कॉपी किए थे वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। हेल्पर पे जनरेट करके कॉपी करी। हाँ, वो वाला सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। आपको यहाँ पुट करना है। अच्छा, मान लीजिए मेरा कोई ग्रुप नहीं है, अकाउंट का नाम क्या दे यहाँ पे? नहीं, आप अकाउंट ग्रुप, आपको इसमें ग्रुप भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें जो मेरी जो सेटिंग हो रखी है वहाँ पे अकाउंट सेटिंग में यहाँ पे मैंने ग्रुप को येस किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ग्रुप नेम ही देना पड़ेगा। अच्छा, ग्रुप नेम ही देना होगा, ठीक है। ग्रुप, अगर आप यहाँ पे सिर्फ अकाउंट नंबर दे देंगे, अगर अकाउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर आपको वो अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। जैसे जो मेरा अकाउंट था अपस्टॉक का, जैसे मेरा अकाउंट नंबर है अपस्टॉक का, दिस वन, तो आई विल पुट दिस अकाउंट नंबर हियर। बट यहाँ पे वो सेटिंग में अकाउंट नंबर नहीं लेता है, वो ऑलवेज टेक अ ग्रुप नेम। तो जो भी आप ग्रुप बनाएंगे, यू विल पुट द ग्रुप नेम हियर। अच्छा मैम, ये राउंड ऑफ और ये जो क्वांटिटी है, राउंड ऑफ मीन इफ यू पुट अ 50, इट विल टेक द नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन। राउंड ऑफ मीन कि वो पॉइंट कैलकुलेट करता है कि मुझे कितने पॉइंट नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन लेने। अगर ये राउंड ऑफ आप बड़ा डाल देंगे तो वो ज्यादा दूर चला जाएगा। सो ऑलवेज ट्राई टू गो 50 और 100, देन इट विल टेक नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन। आप क्या फेवर करते हैं, 50 या 100? पुट इन 50। और क्वांटिटी मतलब ये लॉट साइज है? लॉट साइज जैसे आप अगर स्टॉक में कर रहे हो तो आप कुछ भी लॉट साइज डाल सकते हैं। आप अगर ऑप्शन में कर रहे हो तो जैसे आप बैंक निफ्टी कर रहे हो तो आपको 25 डालना है, फिर उसका मल्टीप्लाई 50 डालना है। और अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो यू कैन पुट 50 देन 100, मतलब शुड बी अ प्रॉपर लॉट साइज। अच्छा मैम, ये ग्रुप नेम क्या केस सेंसिटिव है क्या? माने एज इट इज डालना पड़ेगा ग्रुप नेम? केस सेंसिटिव, तो आपने जो ग्रुप नेम वहां डाला है, मेक श्योर दैट शुड बी हियर। That's all. Excuse me, ma'am. वहाँ कैपिटल Hello? दिया, the letter should be capital, the group name should be same.
मैम रिलायंस में एसएल का कितना रहना चाहिए? रिलायंस में आप एसएल अपना 4 पॉइंट रख सकते हैं। ठीक। अब मैं रिलायंस पे भी लगा के मैम दिखा देती हूँ, एक मिनट, मैं रिलायंस पे भी लगा के दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा रिलायंस में कैसे करना है। मैम ये स्टॉक कोई भी सी स्टॉक सारे पे मत लगाइए क्योंकि हर स्टॉक R4 ब्रेकआउट में नहीं देता है टारगेट, जस्ट रिलायंस हमेशा दे देता है, तो पुट इट ऑन रिलायंस और कफोग में लगा सकते हैं, पर अभी आप निफ्टी और रिलायंस में करिए, और अगर जो मैं स्टॉक्स एक दिन पहले आप लोगों को देती हूँ कैमरीला के, आप उस पे लगा सकते हैं। मैम स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रेल होगा क्या? हाँ, स्टॉप लॉस पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। ट्रेल हो जाएगा क्या मैम? पार्डन? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैम, नहीं, इसमें ट्रेलिंग जैसे स्टॉप लॉस मार्केट नहीं बढ़ता है, है। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी फीचर नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम आप जो एक दिन पहले स्टॉक टारगेट देते पे हैं, एग्जीक्यूट होगा टारगेट, और आपका या तो टारगेट हिट होगा तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। Ma'am, so till now you have explained about how to change the settings of this indicator, how to take this. Now, Yes. how to disable this, ma'am? And whenever अभी मैं बता रही हूँ, अभी आपने सेटिंग कर ली, अभी ट्रेड नहीं लेगा सिस्टम, अभी सिर्फ सेटिंग हुई है, अभी ट्रेड नहीं जाएगा आपके उसमें। अभी ट्रेड लाने के लिए आपको अलर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी सिर्फ अगर आपने ऐसे ऑन कर दिया तो अभी सिर्फ आप सिस्टम आपको यहाँ पे जरूर दिखा देगा कि ये आपकी एंट्री कैंडल है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री कैंडल है, ये आपका टारगेट हिट हुआ है, बट सिस्टम विल नॉट टेक अ ट्रेड इन योर अकाउंट until there is one more step you have to follow, then the system will take a trade. अभी सिस्टम ट्रेड नहीं लेगा, अभी सिस्टम सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट दिखाएगा। okay, so that is I didn't That is understand. the next Ma'am, step. I'll but, teach. I'll teach you next. मैम so you are yet to explain about how that is How when to put the setting? ये आपने सेटिंग कर दी, अब सेटिंग हो गई, अब सेटिंग के बाद आपने ट्रेड लेना है, उसका थर्ड स्टेप है, दैट आई विल टीच यू अभी की कैसे करना है। okay. मैम नैरो कैमरीला स्टॉक्स में टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? आप जो एक दिन पहले देते हैं स्टॉक इस फंडे से ट्रेड लेने तो आप 1 मिनट भी रख सकते हैं, क्योंकि इस फंडे में हमारी कैंडल क्लोजिंग का नहीं देखना ना, हमें सिर्फ देखना है कि एक लेवल है, वो लेवल जैसे सिस्टम ने टच कर लिया था वी विल एंटर इनटू द ट्रेड, तो देयर इज नो कैंडल क्लोजिंग कंडीशन इज देयर, सो यू कैन पुट 1 मिनट आल्सो ओनली। ओके ओके। देखिए this strategy we are not taking care of the candle closing, we are just waiting for the one level to be touched, and once the level touch our system will take a trade, so 1 minute is okay। तो जैसे अभी रिलायंस पे लगाना है, रिलायंस पे आपने डाला, यहाँ पे आपने सारे टाइम वगैरह कर दिया, आपने यहाँ पे जोन ओपन कर दिया, आपने ऑफ टाइम कर दिया, यहाँ पे आपने स्टॉक कर दिया, यू हैव टू सिलेक्ट द स्टॉक एंड यू विल पुट रिलायंस। यहाँ पे रिलायंस डालेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप जो स्टॉक ले रहे हैं उस स्टॉक पे आपका जो वो है, जो उसका सिंबल है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे ऑटो ट्रेड में जाना, स्टॉक डेवलपमेंट में इंस्ट्रूमेंट्स में जाना, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, जैसे आपने रिलायंस देखना है तो अब यहाँ पे रिलायंस टाइप करके सर्च करिए, जैसे आप सर्च करेंगे इट विल शो यू द सिंबल, तो आप यहाँ से सिंबल कॉपी भी कर सकते हैं, जिससे आपका सिंबल गलत नहीं होगा जो आपने सिंबल डालना है यहाँ पे, क्योंकि सिंबल से ही वो ट्रेड करेगा। तो आपने यहाँ पे सेटिंग्स में गए और आपने यहाँ पे तो यहाँ पे आपने जो एक मिनट यहीं पे रिलायंस, हाँ यही कर देते ना, तो हम इसे रिलायंस कर देते हैं। सेटिंग कहाँ कर रही थी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डाला, आपने यहाँ पे इसमें रिलायंस कर दिया, यू हैव टू राउंड ऑफ, यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी आर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, तो उसमें ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट नहीं करना है, तो यू कैन कीप काइंड ऑफ जीरो ब्लैंक ऑल्सो, 000 ऑल्सो, नजन मैटर। जहाँ पे आप एक्सपायरी डेट भी जीरो कर,
एक्सपायरी डेट भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, दैट डजंट मैटर, क्योंकि हमें एक्सपायरी डेट से कोई मतलब नहीं है व्हेन यू आर टेकिंग अ स्टॉक। एपीआई के यहाँ पे ग्रुप नेम, एनएसएस, क्वांटिटी, जितना भी आप स्टॉक्स लेना चाहते हैं, अगर आप जैसे 50 लेना चाहते हैं, पुट इट 50, एंट्री पॉइंट, target point, and your stop loss multiplier of 4. If you put and you put the OK, the system will ready to take a trade in Reliance. ठीक है? Ma'am, so what is the latency you might have seen, ma'am? Like once it has been crossed that level, like will the order gets executed less than a second or Within what? a second, within a second. जैसे ही उस लेवल का टच होगा, within a second आपके सिस्टम में ट्रेड हो जाएगा। हम टारगेट मल्टीप्लायर हमने क्या करना था? टारगेट मल्टीप्लायर में अपने 618, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटजी इसमें हमने 618 लेवल पे फिबो पे प्रॉफिट बुक करना है ना, तो 618। अच्छा, तो 1 मिनट के हिसाब से अगर हम यहाँ S4 ब्रेकडाउन हुआ था अभी निफ्टी में, तो 0.236 पे उन्होंने एंट्री ली होगी करने, और 0.618 पे उन्होंने टारगेट बीट कर दिया, तो ये स्टॉप लॉस क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? S4 ब्रेकआउट में स्टॉप लॉस हिट हुआ था रिलायंस निफ्टी में। S4 ब्रेकआउट का 618 टारगेट हिट नहीं हुआ था उसे। ठीक है? मैम ये जो ट्रेड लेगा वो S3 और R3 के बीच में लेगा या फिर S4 और R4 ब्रेकआउट की लेगा? जहाँ पे जो जोन ओपन करेंगे सिर्फ उसी जोन में ये ट्रेड लेगा। अगर आपने यहाँ पे जो जोन ऑफ कर देंगे वो जोन पे ट्रेड नहीं लेगा। मैम जैसे कल का DLF का अगर अपन देखेंगे तो एक बार प्लीज देखिए ना, DLF कल का। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसने S3 ये आपका सिर्फ R5 तक ही ट्रेड लेगा, R6 तक ही ट्रेड लेगा, R5 ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं लेगा। जैसे आपने जोन गोस्वामी डाल दिया, यहाँ से यहाँ ट्रेड ले लेगा, यहाँ से यहाँ ट्रेड ले लेगा, उसके बाद ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन है वो कैमरीला पे ही है। Okay, ma'am. Yeah, thank you. Ma'am, nowadays in the Nifty first 5 minutes candle, we see that spike on both the sides. Either it opens high and comes down, and again it retraces. Now, is it? Then it will take a trade. अगर इसने R4 से ऊपर हुआ, it came down and touches R4 and given the reversal, then system will take a trade. Okay. So at that time the premium will be high. So is it advisable to go with algo on first 15 minutes, first 5 minutes, or? I advise you to not to take a trade in first 15 minutes, because first 15 minutes the market is volatile, so sometimes it's happened that your stop loss get hit. So I'll always advise you to take a trade after first 15 minutes. Okay, thank you. मैडम इस पे फिबो प्लॉट नहीं करना होता ना, ये ऑटोमेटिक? नहीं, you don't need to plot Fibo because the system is calculating. If you are giving any level to the system will calculate by himself. You don't need to draw anything. अगर आप कैमरीला भी ड्रॉ नहीं करोगे, आप कुछ भी ड्रॉ नहीं करोगे, आप सिर्फ इस इंडिकेटर को ऑन करके छोड़ दोगे, तो एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड बाय द सिस्टम ओनली। मैडम रिलायंस के अलावा और कोई स्टॉक? Apollo you can try and Kafog you can try. Okay. और मैम ये ऑन और ऑफ करने का, मैम सॉरी, हाँ वो मैं आगे बता ऑन और रही ऑफ हूँ। आपने ये ऑन कर दिया, आपने ये इंडिकेटर लगा दिया, आपने इंडिकेटर लगा के यू हैव सेट मेड द सेटिंग। मैं इसमें निफ्टी पे अगर सेटिंग कर देती हूँ, इसको मैं बंद कर रही हूँ, इसको हम निफ्टी का ही कर देते हैं। ट्रेड टाइप का स्टॉक है। हाँ ट्रेड टाइप को मैं ऑप्शन कर देती हूँ। ठीक है, अब यू हैव डिड, अब ये सिस्टम अभी ट्रेड नहीं लेगा, सिस्टम इज जस्ट, ये आपका इंडिकेटर बन गया। अभी आपको सिर्फ जब एंट्री हो जाएगी, इट विल शो यू इन द सिस्टम दैट एंट्री हैज बीन, यू कैन 236 लेवल हैज बीन टच, target it will show you that 618 level has been touched. Everything is that it won't give you the trade, it won't take a trade, it will just, it's as an indicator, it's just giving you a signal that this here the entry happened, here the target happened, so it will, it yes to जाता, you can back test it before। ठीक है, नहीं मैम वो तो ठीक है मैम, मैं वो आपकी बात क्या मैडम ये जो ऑन करने का है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये डेली ऑन ऑफ करना पड़ेगा क्या? नहीं, एक बार आपने एक चार्ट पे सेटिंग लगा दी, then it will work, you don't need to on off it। Then what you need to do, मैं आपको बताती हूँ।
अब आपको ट्रेड लेना है, टेक अ ट्रेड, देन यू वांट दिस इंडिकेटर शुड टेक अ ट्रेड इन योर सिस्टम, व्हाट विल यू विल गो टू अलर्ट, ठीक है। आफ्टर गोइंग टू अलर्ट यू विल सिलेक्ट माय टूल हियर, यहाँ पे आप मेरा टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो आपकी कंडीशन में मेरा टूल दिख जाएगा। हियर यू विल पुट द, यहाँ पे आप एक वीबुक यूआरएल होता है, इसको ऑन कर लेंगे। आपने वीबुक यूआरएल को ऑन कर लिया, आई हैव गिवन यू इन 1 minute। आपने वीबुक यूआरएल को ऑन कर लिया, देन आई हैव गिवन यू दिस, आपने यहाँ पे किया, कहाँ गया, here you will put the vbook URL. I have given that URL in that manual also. That vbook URL is tv.strocksdeveloper.in. तो यहाँ पे नहीं चल रहा, बट आपको ये कॉपी करना है, तो you will put this vbook URL here, tv.strocksdeveloper.in, and then you will create it. मेक श्योर, जैसे मैंने ये गलती करी, मैंने सेटिंग में रिलायंस निफ्टी की सारी सेटिंग कर दी, बट आई हैव ओपन, आई हैव क्रिएटेड दैट लिंक ऑन रिलायंस, सो ये अलर्ट मेरा, सारे अलर्ट क्यों हुआ है, ये देखिए मेरा रिलायंस पे हुआ है। अब ये रिलायंस पे टूल चलेगा और ट्रेड निफ्टी में ले लेगा, तो डोंट मेक दिस मिस्टेक, आई एम स्टॉपिंग दिस अलर्ट। यू हैव टू मेक श्योर आप जिस पे ट्रेड करना चाहते हैं आप उसी का ही चार्ट ओपन हो और उसी की ही सेटिंग लगी हो, आपके इंडिकेटर मस्ट हैव द सेम सेटिंग एंड इट शुड हैव दैट सेम चार्ट शुड बी ओपन, देन शुड क्रिएट द अलर्ट, सेलेक्ट द टूल एंड यहाँ पे वीबुक यूआरएल में पुट द वीबुक यूआरएल, नोटिफाई पॉपअप और ये सब चीजें ऑन कर दीजिएगा, सो दैट व्हेनेवर द सिस्टम विल टेक अ ट्रेड इट विल पॉपअप विल हैपन एंड इट विल इन्फॉर्म यू दैट द सिस्टम इज टेकिंग अ ट्रेड। पुट द वीबुक हियर एंड क्रिएट। So once you create, you will see that I have so many alert. I'm doing the experimenting alert. I forgot to delete. Once you create the alert, open the alert, you will see here that the alert on this this Nifty chart has been activated. So once the system will touch this my level, entry level, now the system will the stock developer will take a trade in your broker site. If you don't want to take a trade, you just should go and stop that alert. Once you stop that alert, delete the alert, or you want to stop that alert. Once you stop that alert or delete the alert, the system won't take a trade in your broker side. It will just give you a signal on the chart that the entry has been made or the target has been hit, but it won't take a broker side. It will only take a trade in the broker side when your alert is activated. So once you have created one alert, if you have created the one alert, if you check, there is a validity given on the alert 12/1/2020. So then you don't need to create the new alert till 12 of January 2020. It will keep taking the trade, but you have to make one thing. Whenever you are making any changing in the setting, whenever you, after creating the alert, whenever you are making any changing in the setting of the tool, you have to recreate the alert, क्योंकि एक बार जो अलर्ट क्रिएट हुआ है उसने पुरानी सेटिंग पिक करी होती है, वो नई सेटिंग पिक नहीं करता है। सो वंस यू आर मेड एनी चेंजेस, आपने एक्सपायरी डेट चेंज करी है, आपने कोई एंट्री पॉइंट चेंज किया, एनीथिंग यू हैव चेंजेस इन एनी अलर्ट, anything in changes in and tool, then what you have to do, you have to recreate the alert, you have to delete the old alert and you have to create a new alert, then the system will take a trade as per the new setting of the tool. मैम यहाँ पे एक बात है, ठीक है, पूछना चाहता हूँ। बोलिए। हाँ, तो मान लीजिए कि आपने बोला कि जिस चीज का ट्रेड होगा वो चीज ट्रेड व्यू में ओपन होना चाहिए। नहीं, ओपन नहीं होना चाहिए। जब आपने अलर्ट क्रिएट करना है बस उसी टाइम वो चार्ट ओपन होना चाहिए। एक बार अलर्ट क्रिएट हो गया तो आप उस चार्ट को क्लोज भी कर देंगे तो दैट डजंट मेक
any difference. ओके ओके, उसके बाद में दूसरा हाँ, उसके कोई बाद you शेयर can close it, but the time of creating the alert, that chart should be open so that system will take that he is creating the alert on this chart. After creating the alert, you can close the chart. The system that doesn't make any difference. Your trade will be executed. लेकिन क्या मैडम ट्रेडिंग व्यू चालू alert- रखना पड़ेगा अलर्ट के लिए? नहीं, you don't need to open the system. System will take a trade. आपने बस एक बार अलर्ट क्रिएट कर दिया, बस सुबह एक बार रात शाम को चेक कर लीजिए कि आपका अलर्ट ओपन है. आप सुबह चेक कर सकते हैं आपका अलर्ट एक्टिवेटेड है. The alert is activated, your settings are okay, everything is okay. You don't need to open the system again. The system will take a trade. ओके मैम, अच्छा मैम, one एक doubt. और At a time one trade or 2-3 trades are possible? Yes, it can take. आप अगर आप जितने मर्जी करिए, आपने एक निफ्टी पे अलर्ट लगा दिया, फिर आपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे अलर्ट लगा दिया, then the system will take a trade. आपने जैसे मैंने निफ्टी पे सेटिंग करके मैंने सारा लगा दिया. Now while यहाँ पे मैंने एक नया चार्ट खोल लिया, यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग बैंक निफ्टी पे लगा दी और मैंने बैंक निफ्टी पे नया अलर्ट क्रिएट कर दिया, तो सिस्टम विल टेक अ ट्रेड. क्योंकि मैंने बस मेक श्योर आप जितना जिस सेटअप पे जिस चार्ट पे ट्रेड करना चाहते हैं, जस्ट मेक श्योर यू हैव मेड द सेटिंग ऑन दैट चार्ट एंड यू हैव क्रिएटेड द अलर्ट ऑन दैट चार्ट. तो एज पर द अलर्ट सिस्टम विल टेक अ ट्रेड. Ma'am, one doubt. Hello. Yes. Madam, for each stock will have to create separate alerts? Yes, you have to create a separate alert. आपको पहले उस स्टॉक के ऊपर उसके स्टॉक के चार्ट के ऊपर सेटिंग्स करनी होंगी इंडिकेटर की, देन यू हैव टू क्रिएट अ अलर्ट. तो आप जितने अलर्ट क्रिएट करेंगे उतने टाइम सिस्टम उसी अलर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेगा. बस मेक श्योर कि आपके अकाउंट में उतना मार्जिन होना चाहिए ताकि आप उतने ट्रेड ले सके. Ma'am, once we create the alert, ma'am, once we create the alert, should we keep the indicator on? No need to. You don't need to keep the chart on. If you have created the alert, the system will do its duty. You don't need to open the chart again. Can I close the indicator and do my own trading manually also? Yes. Just make sure आपने जिस चार्ट पे ये काम किया उस चार्ट को क्लोज करके just open a new chart and do your work. मैम सोचिए अगर सुबह को मैंने अलर्ट किया, ठीक है, अलर्ट सब कुछ करके आधा घंटा 1 घंटा में सब कुछ करके मैं काम पे निकल गया, या कोई काम मेरा आ पड़ा, मेरा बिजनेस है, मेरा क्लाइंट आ गया, ठीक है, तो उसके बाद मैं जब भी चाहूँ अलर्ट को मोबाइल से डीएक्टिवेट कर सकता हूँ क्या ट्रेडिंग व्यू में? If you have a trading view app on your mobile, I think you can do. Okay. मैम एक बार बैक टेस्ट कैसे करेंगे? वन क्वेश्चन है मैडम. स्टॉक जो फ्यूचर स्टॉक है उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन में? हाँ, फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं. और जो स्टॉक है उसका स्टॉक मींस ऑप्शन कर सकते हैं स्टॉक का? फ्यूचर भी ले सकते हैं बट ऑप्शन नहीं ले सकते. स्टॉक का ऑप्शन नहीं ले सकते. Because the stock option doesn't have the option of getting a limit of market order. So the system only now, as of now, system is taking only market order. Okay. Ma'am, can you show the alert settings again? 1 second, guys. 1 second. 1 second. I'll be back. Give me 1 second. Yes, guys. Ask your question. Ma'am, can you show the alert settings again? कैसे करेंगे दिखाएंगे? Pardon? बैक टेस्ट कैसे करेंगे दिखाएंगे एक बार? बैक टेस्ट आप ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे आपने निफ्टी में किया, अभी आप 1 मिनट में कर रहे हैं तो आप 1 मिनट की जगह 5 मिनट में कर लीजिए, कोई इशू नहीं है. क्योंकि आपने जो बैक टेस्ट करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये सिस्टम ने ट्रेड कितनी बार लिया और कैसे लिया. तो आप जैसे पीछे जाते जाएंगे तो आपको ये सिस्टम
आपको सिस्टम हर एंट्री पॉइंट पे एक एरो दिखाता जाएगा और हर एग्जिट पे एक डॉट दिखाता जाएगा। तो यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ एरो एंड डॉट दैट कि ये सिस्टम ने कितनी बार ट्रेड लिया, कब उसका टारगेट हिट हुआ, कब उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्योंकि जब भी उसका स्टॉप लॉस हिट होता है वो येलो लाइन टच करता है, और जब उसका टारगेट हिट होता है वो पर्पल लाइन टच करता है। तो आप इसे पीछे देख के आप एरो और डॉट से यू कैन चेक इट आउट कि कितनी बार इसका, जैसे इस दिन है यहाँ पे टारगेट, ये ऊपर गया स्टॉप लॉस हिट हुआ, नीचे गया हियर इट हिट द टारगेट। तो ऐसे आपको सिस्टम में सेटिंग करके यू हैव टू चेक इट आउट। ओके ओके। Ma'am, can you show the settings for alert once again? I'll show you. I'll show you. मैडम ये ट्रेडिंग व्यू का आई मीन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही स्टार्ट होगा क्या? हाँ, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो आप ये टूल ऑन कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, बट जो सब्सक्रिप्शन के बाद ही जहाँ पे ये वीबुक लिंक डालने की जो देता है ना, ये वीबुक लिंक ये सिर्फ पेड मेंबर्स को देता है, फ्री में ये वीबुक लिंक नहीं डाल सकते। और अगर ये अपने वीबुक लिंक नहीं डाला, क्योंकि ये वीबुक लिंक ही हमारे ट्रेडिंग व्यू को स्टॉक डेवलपर से कम्युनिकेट करता है, तो अगर ये हमने लिंक नहीं डाला तो हमारा ट्रेड नहीं होगा। आप बैक टेस्टिंग जब तक करना चाहते हैं इस टूल से, आप फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग में ये टूल चल जाएगा, बट जो आपका अलर्ट है वो क्रिएट नहीं होगा। तो जब आप रियल ट्रेडिंग करना चाहते हैं देन यू कैन बाय द ट्रेडिंग व्यू। ओके, थैंक यू। और ये 1100 हेलो मैम, 1000 रुपीज पर मंथ है शायद इनका। बीच में इनका ब्लैक फ्राइडे में अच्छा स्कीम आया था, बट अब देखो दोबारा कब आता है। मैम उसमें आ सकता है आपका बॉक्सिंग डे में। कब? बॉक्सिंग डे जिस अराउंड 25 दिसंबर। बॉक्सिंग डे कहते हैं मैम। हाँ, दैट टाइम, बट आई दैट डे आई सेड कि आपको एक अच्छा स्कीम जो मैंने लास्ट वीक बोला था, दैट आई देन आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट दैट इज फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स, नॉट फॉर द न्यू मेंबर्स। We got one scheme, $89 per year. So very good scheme I'm getting. So I'm planning to renew my scheme. Let's see. मैम अगर आपने 5 स्टॉक में अलर्ट लगाया तो 5 का मार्जिन चाहिए या जो पहले आ गए? You have to नहीं, अगर आपने 5 स्टॉक में लगाया तो जो पहले ट्रेड हो जाएगा वो हो जाएगा, पर दूसरा जब होगा तो फिर आपका सिस्टम मेरा ट्रेड लेगा, पर आपका ट्रेड रिजेक्ट हो जाएगा। Okay. Ma'am, can you hear me? One second. अगर आपने जैसे हाँ, I can hear you. अगर इसने आपने you have put it the alert on 5 stocks, the system will take a trade on first stock, second stock. If you have a margin, it will take a trade in third stock. But if you don't have the margin, what system will do? The system will reject. मतलब my system will take a trade, but broker will reject your trade because of the margin issue. मैम ये जो ट्रेड लेगा वो क्या MIS पे लेगा क्या? Yes, MIS order होगा। MIS order। Ma'am, I just wanted to confirm that we can do the algo trading and the manual trading on the same account simultaneously. No. Yes, see that point I wanted to take that. System में क्या होता है, आपने जो मेरा जो system है, जैसे आपको पता है सारे broker only one web based login allow करते हैं, not more than it. तो whenever my system will take a trade, it will log off your account from the web, so it will be difficult. और कई बार क्या होता है, अगर आप अपना लॉगिन रखेंगे तो कम्युनिकेशन से एरर आ जाती है। तो ऑलवेज ट्राई कि आप जिस सिस्टम में एल्गो ट्रेड करें, जस्ट कीप इट सेपरेट एंड आप फॉर योर मैनुअल ट्रेडिंग जस्ट ओपन अ डिफरेंट सेटअप ट्रेड अकाउंट। Is there any dashboard exists, ma'am, to track whenever my system will hit your, when the stock developers will hit your system and it will try to take a trade, अगर आपका login होगा तो it will log off, it will automatically log off. So can dashboard exist? So you can track on the mobile app. If you want to track your trade, you can track on the mobile app. There's no. मैम ये log off कब होगा? Whenever my system will take a trade on your account. At time this your system, your account will get log off. और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप वेब पे लॉगिन है तो कम्युनिकेशन एरर आ जाती है कि यहाँ से ट्रेड आता है बट आपका लॉगिन होता है वो ट्रेड ले नहीं पाता है। तो समटाइम मैं फीस है, तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि जो भी अकाउंट आप एक ट्रेड स्टॉक डेवलपर को दे रहे हैं जिसमें आपका ट्रेड होना चाहिए, ट्राई टू नॉट टू यूज अ वेब लॉगिन ऑफ दैट अकाउंट, यू जस्ट ओपन द मोबाइल ऐप टू ट्रैक योर ट्रेड्स। मैम इसका मतलब है कि मैं अगर लैपटॉप में मेरा एल्गो सेटअप किया हो, ठीक है, तो उसमें मैं जीरोधा ओपन नहीं करूंगा, मैं अपना मोबाइल में कर सकता हूं। ओपन नहीं करोगे आप, जो आपका ब्रोकर साइट है ना, बस ब्रोकर साइट को आप ट्राई टू नॉट यूज द वेब वर्जन ऑफ दैट, वेब लॉगिन ऑफ दैट ब्रोकर साइट, ऑलवेज ट्राई टू ओपन द मोबाइल ऐप ऑफ दैट ब्रोकर।
माने उस सिस्टम में नहीं कर सकता, माने मैं अपने डेस्कटॉप में कर सकता, सिस्टम में ऑन नहीं कर सकते, आपको उसका वेब लॉगिन करना ही वेब नहीं है, लॉगिन करना ही नहीं है। ओके, ब्रोकर का वो वेब लॉगिन आपको नहीं करना है। So, ma'am, this is valid only when a trade is going on, right? या इसे आप ओपन द, अगर आपने अपना एल्गो ट्रेड ऑन कर दिया, ट्रेड तो आपने अगर ऑन कर दिया, तो आपने अगर लॉगिन किया हुआ है, तो जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो माय सिस्टम विल कम्युनिकेट, माय सिस्टम मतलब द स्टॉक डेवलपर विल गो टू योर ब्रोकर साइट एंड विल टेक अ ट्रेड। तो अगर आप लॉगिन होगे तो आपका वो ब्रोकर साइट को लॉग ऑफ करेगा ट्रेड लेने। और कई बार क्या होता है, लॉग ऑफ और इसमें कम्युनिकेशन एरर आ जाता है, तो आपका ट्रेड भी ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो। तो आप ट्राई कीजिए कि इसको जब आप जो एल्गो सेटअप में जो वो दे रहे हैं, अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट दे रहे हैं, तो give some separate account which are you are not using frequently। जैसे मेरा जो आजकल आप बोलते हैं कि मैम जो निफ्टी के आप ट्रेड डालते हो उसमें स्टॉक्स के ट्रेड क्यों नहीं है, क्योंकि स्टॉक में मेरी 90% ट्रेडिंग वो होती है, ऑल्गो ट्रेडिंग होती है। तो मैंने मेरा जो जब क्लाउड से भी वहां पे ट्रेड होता है तो मेरा लॉग ऑफ हो जाता है, क्योंकि मेरा क्लाउड उसमें लॉग इन करने की कोशिश करता है, तो इसलिए वो एक सेपरेट अकाउंट है। इसलिए मैं वो आपको नहीं, जो मैं आप लोगों के साथ आजकल यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ, दैट इज अकाउंट वेयर आई डू मैनुअल ट्रेडिंग ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर मेरा जो एल्गो ट्रेडिंग के लिए दैट इज प्लीज सेपरेट अकाउंट, उसको मैं मोबाइल पे ट्रैक करती हूँ। आई नेवर ओपन द वेब बेस्ड ऑफ दैट, क्योंकि फिर मेरे लिए कम्युनिकेशन एरर आती है और वो लॉग ऑफ हो जाता है, तो इट क्रिएट अ प्रॉब्लम। फिर उसलिए मेरा वो अकाउंट सेपरेट है, सिस्टम अपने आप उसमें ट्रेड करता है। तो मैम मान लीजिए एक लिया इसने एल्गो ने टोकन एंट्री, so is there is any way to see where what are the stocks or the index I have created those alerts, ma'am? Like Pardon, if I didn't get your question. So if I want to see that for what are all the stocks or indexes the alert I have created, now where can TradeView account you can keep in login. I'm not saying you have to log off your TradeView account. TradeView account you can keep login. You have to not to log in web login of your broker account. TradeView account where there is no problem. No, ma'am. No, what I'm asking is, suppose I have created the alert for Reliance. Now, tomorrow I'm going to create an alert for Zeal. Now, if I now, where can I see that for both these stocks? If you go that this, if you see on the side, there is one clock here which showing alert. When you click on that clock, it will show you all the alert you have created. मेरे पास कुछ ज़्यादा ही alert created है, क्योंकि मैं I forgot to delete it because I keep on experimenting new things. So I keep the, so here you will see all the alert. Like here you can see my Reliance alert, and here you will be able to, अगर मैं यहाँ पे एक नया alert create कर देती हूँ निफ्टी पे, जैसे मैंने निफ्टी पे create कर दिया अपने वीबुक से, तो मैम वैसे भी जितने भी जीरोधा है या एलाइस है या एंजल ब्रोकिंग, उनका सबका अलर्ट ऐसे भी मोबाइल पे आ ही जाता है, आप कहीं से भी ट्रेड करो। हाँ, तो आप मोबाइल पे ट्रैक करो ना। ऐसे भी मोबाइल आपका अगर ऐप भी ओपन नहीं है तो भी किसी के भी अकाउंट में वो ट्रेड आता है तो उसका एसएमएस आ ही जाता है उनका। हाँ, अगर आपने एसएमएस फैसिलिटी ओपन करी हुई है तो। एसएमएस भी और आपने ऐप भी डाला हुआ, आपका ऐप चालू भी नहीं है तो भी वो आपको फैसिलिटी देता ही है उसका सिस्टम से डिफॉल्ट ट्रैक कर सकते हैं अपना। मैम मान लीजिए एल्गो ने एक ट्रेड एंट्री ली और फिर एग्जिट कर दिया, मान लीजिए टारगेट हिट हो गया, तो यू आर सेइंग कि वो लॉग आउट हो जाएगा, फिर एक दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी तो वो दोबारा लॉग इन करेगा? तो वो सिस्टम अपने आप कम्युनिकेट करेगा। आपको, मैं बोल रही हूँ, आपको अपना वेब बेस लॉगिन नहीं करना है। जब भी सिस्टम ट्रेड लेगा वो अपने आप सारी लॉगिन डिटेल चेक करके सिस्टम में टेक अ ट्रेड। बट अगर आप वेब पे लॉगिन है तो देन सिस्टम को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप लॉगिन नहीं है तो सिस्टम की दैट इज सिस्टम हेडेक। जितनी बार वो अलर्ट होगा वो दैट इज देयर हिज हेडेक, ही विल कंटिन्यू टेकिंग अ ट्रेड विद इन अ सेकंड। Ma'am, for example, like one trade is executed and the trade is complete. Then after that, if I pause that alert, and then I can log into my web, for example, Upstocks, and then I can do. Then you can do. Okay, I have to pause the alert, and then I can. You have to pause. जैसे यहाँ पे अलर्ट दिख रहा है, you have to, यहाँ पे ट्रेड स्टॉप बटन, you have to stop this alert, और जब तक आप इस अलर्ट दोबारा ऑन नहीं करेंगे, then the system won't take a trade in your system. Okay, ma'am. And if you are making a new setting, whenever you're changing a setting, you have to close this alert. आपको इस alert को delete करना है, then you have to create a new alert. And I'm repeating how to create an alert.
here in the condition, you have to select the tool Cambrilla 35, that is my tool. You have to select the tool. यहाँ पे आप notify on app, no show pop-ups and DMN. You can select any option that will give you the email also, that will give you show you the pop-up also whenever the alert will happen. Here you have to put this URL tv.stocksdeveloper.in, that URL given in my manual. After putting this URL, you have to just create the alert. Once you create the alert, this alert will be shown in this alert window. और when the alert will executed, यहाँ पे alert log में आपको alert भी दिख जाएगा. जैसे आपका कोई alert execute होगा, in this alert log you will be able to see that alert. जो alert execute हुआ, you will be able to see that alert in this window. Ma'am, one quick question. So when we are, setting up a... Sunil, one second. Sunil, I can keep the top question after the topic, but ये जो alert system है, ये जो algo system है, that is a little bit confusing. That's why I wanted to take a question along with this topic so that everything should be clear. I'll explain that stop multiplier. Sunil, I think आपका वो creating alert got clear. Should I repeat it? Do let me know. हाँ जी, बोलिए. No, it is clear. It is clear. Thank you. Yes. Yeah. So when we are setting up the for stock option, for choosing the lot, what exactly should we mention in the alert? Because each stock option will have different lot size, right? Stock option, I'm saying you can't trade with this on the stock option in this with this tool. You can only trade only stocks, future or equity. Okay. Yeah. And if you are selecting the future, so you have to select the lot size of every stock. You have to select the exact lot size of that stock. So say either if you are trading in Reliance, the stock size is 250. If you are trading in any another stock with stocks lot size is 500, so you have to put the exact lot size of that stock. Thank you. And if you are trading in equity and cash, एक बार फ्यूचर का एग्जांपल दीजिए ना. सी फ्यूचर सेम है, जैसे आपने यहाँ पे इसके कंडीशन दिया निफ्टी का, यहाँ पे आपने निफ्टी का दिया एंड यू वांट टू ट्रेड इन फ्यूचर, तो आप यहाँ पे फ्यूचर पे करिए. यहाँ पे आपने निफ्टी डाला, no need to select round off, no need to select the expiry because it will definitely gonna take the current expiry, current week expiry, so you can avoid this. Or here you have to just put the exact lot size. So you can avoid in the case of future or in the case of equity, you can avoid this two option. जो हमारा round off expiry option है, you can avoid it. There's no need to put this two option. And only you need this two option when you are using an option trading of any indices, so that it can calculate the exact expiry, it can calculate the exact strike price for you. Then you have to put this. Otherwise, in the case of future or in the case of equity, you can avoid this two option. The API key, group name, NSE, quantity. In case of equity, you can put any quantity because 10, 20, 30, आप जितना भी लेना चाहते हैं, you can put it. But in the case of future, you have to put the exact quantity as per the lot size. अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो you have to check what is the lot size of that stock future. So as per the lot size, you have to select the quantity in the case of future. मान लीजिए मैम मैं अगर रिलायंस की ऑप्शन में अगर ट्रेड करना चाहूँ या फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अभी लिमिट ऑर्डर की आई एम वर्किंग ऑन दैट, मैं लिमिट ऑर्डर का करवा रही हूँ. अगर इसमें अभी लिमिट ऑर्डर की ऑप्शन नहीं आई है, इट ओनली टेकन अ market order, but the market order option is not available in option of stocks, so that won't be possible as of now. मैडम SL मल्टीप्लायर कैसे? हेलो हाँ, SL मल्टीप्लायर मैं आपको एक बार बता देती हूँ. नहीं, उसको कैसे डिसाइड करेंगे? डिफरेंट स्टॉक के लिए डिफरेंट होगा ना उसके? हाँ, तो आप जिस स्टॉक में अलर्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप उसके स्टॉक के अकॉर्डिंग उसका लोड साइज आपको देखना पड़ेगा ना. व्हाट्स लोड साइज ऑफ दैट स्टॉक फ्यूचर इज देयर, तो यू हैव टू पुट दैट लोड साइज. एक्सेल मल्टीप्लायर क्रिएट अलर्ट्स इन रिलायंस एंड अदर थिंग 250 है, तो आपको 250 डालना पड़ेगा. नहीं मैम, एसएल मल्टीप्लायर उसमें कैसे डालना होगा? मान लो ये 500 का स्टॉक है, उसका एसएल मल्टीप्लायर कितना होगा? एसएल मल्टीप्लायर मैं आपको बता देती हूँ. मुझे हाँ, यू कैन यू हैव टू चेंज द टारगेट एंड एंटी मल्टीप्लायर बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज डिफरेंट.
आई एम आस्किंग माय टीम कि उसको बाय डिफॉल्ट ही आप जो 236 और वो है वही कर दीजिए, दैट वी विल डू, बट अभी आपको चेंज करना पड़ेगा एज पर द सेटिंग जो मैंने आपको सेटिंग बताई है. यू हैव टू चेंज द सेटिंग एज पर दैट, यू हैव टू मेक द चेंजेस. एसएल मल्टीप्लायर से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, ये जो ट्रेडिंग है, ये जो हम ये जो सेटअप है, ये जो स्ट्रेटजी है उसमें हम ट्रेड करते हैं, वी हैव टू. Ma'am, can you hear me? Yes, I can. Can we just create Reliance and Apollo Hospital like that? We can just create pop-up now. You can create a pop-up, but madam, if you create the pop-up means you want to take a alert, you want to take a trade, or you just want to create a pop-up? I just want to pop up, not You trade. don't want to take a trade. Then in that case, what you need to do, you have to go to alert. You have to create here. You just remove this VBook setting. Once you remove this VBook URL, it will only give the pop-up. It won't take a trade on your system. It will only take a trade when you will put the VBook. Okay, ma'am. Got it. Thank you. Okay. So in the case of stop loss multiplier, what you have to do is stop loss multiplier में क्या होता है? What you have to do? Like I have teach you that this strategy, you are taking a trade at 236 level and your target is 618 level. There is the stop loss is below this level. S3 के नीचे आप कुछ points के नीचे आप अपना stop loss रखते हैं. जैसे निफ्टी की केस में you can keep the stop loss 10 point down. Reliance में केस में you can keep the stop loss 5 point down, तो 4 point down. तो what you have to do, आपने जैसे रखा कि मेरा S3 से 4 point नीचे अगर stop loss हो, अगर R4 breakout हो रहा है तो 4 point नीचे stop loss हो, तो what will you put? You will put your stop loss multiplier here 4 and you press OK. What will do? जैसे यहाँ पे हमारा stop ये S3 है 2443, तो 243 minus 4 is 2439, so it will put your stop loss 4 point below that level, and when the line will the price will touch this level, it will hit your stop loss. Yeah. Yeah. Hello, ma'am. How many trades it will take algo daily? Pardon? How many trades it will take daily algo? जितने बनेंगे? As much as trades are there, it will take all the trades. There is no limit of that. Hello, ma'am. Yes, you can limit down अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने 3 stop loss डाल दिए, तो if by chance, वैसे तो 3 stop loss नहीं करता है algo trade कभी भी, but by chance if the system will hit the 3 stop losses, then your trade system will close for the day. Okay. Then it won't take any other trade. Accuracy क्या है इस algo की? See, in Nifty, I can assure you one thing: if you are taking a old trade in Nifty, you can't close in red. Nifty Reliance work very good. It gives you good profit. And Bank Nifty, it's not. Bank Nifty, I won't suggest you to do the trading in the starting. अगर आप Bank Nifty में करना चाहते हो तो बस please do the back trades. वैसे Bank Nifty में भी ये चलता है. People are doing it. But because Bank Nifty is very more volatile of that, so you should don't try in the Bank Nifty. अगर आप करना भी चाहते हो तो do the back testing first for at least last 6 months. And if you get the confidence, then own this trade in Bank Nifty. See, in the case of Nifty, put your stop loss multiply by 10, or in the case of Bank Nifty, put your stop loss multiply by 20 to 25. अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो हम क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं निफ्टी में, सिर्फ निफ्टी में. फर्स्ट यू कैन, बट आई सजेस्ट यू आप पहले एक ही लोड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है यू आर गेटिंग एनी सेटिंग्स प्रॉब्लम, क्योंकि आपने नए हैं, तो यू विल गेट फर्स्ट स्टार्ट विद वन लोड एंड फॉर नेक्स्ट 1 week स्टार्ट विद 1 लोड. वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस, देन इंक्रीज टू 2 लोड एंड 3 लोड. अच्छा, ओके. बिकॉज स्टार्टिंग में
पिछली बार भी क्या हुआ था, पीपल आर डूइंग इट बट उनको सेटिंग प्रॉब्लम आ गई थी, किसी ने सेटिंग गलत कर दी थी, किसी के कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि यू आर न्यू इट इन द सिस्टम, तो इट विल टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम. So once you are comfortable, you find it okay, then start with improve. Or first day, so I'll suggest you first day when you are putting this setting on your algo setting on your system, try to not to take a trade, try to put some different quantity or some different thing so that trade won't get executed on your broker side, so that you will understand that your settings are okay. Because what happened, what people did, last time what people did, they own the system and they put it, somebody took 2 lot, 3 lot, 4 lot, and they made the mistake in the setting. And what happened with the mistake of the setting, the system taken a wrong trade, and the wrong trade, they made the losses. So you have to take care that in the 1 or 2 days, just understand the system, make sure that you are putting the right setting. Or if you're then if you are comfortable that your right settings are there, system is taking a perfect trade, then do a proper trade. राउंड ऑफ तो सिर्फ ऑप्शंस में कैलकुलेट होगा. Yes, round off and the expiry date is only calculated in the option. Hello, ma'am. Yes. How to add futures to the indicator, ma'am? Here you will select the future bus, and you have, if you put the Reliance or the base symbol, it will automatically select the future. Okay, ma'am. It will automatically go and trade in the future. But while taking a trade, it will take a trade in future. और उसके बाद उसका लॉट साइज मेंशन करना पड़ेगा वहां पे. हाँ, as per the lot. अच्छा. Quantity. अच्छा मैम, ये जो S3 से लेके माने S4, ये जैसे यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता, तो सेफ ट्रेड यही बोलता है कि S3 से S4 डिसेबल करना ही बेहतर होगा. See, you can निफ्टी में अगर आप ऑन भी रखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको लॉसेस होगा, आप ऑन कर सकते हैं, बट ट्राई आप कर सकते हैं. अगर आप उसके साथ अगर वही आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ. मैं यही करूंगी कि आप निफ्टी में ऑन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो भी ठीक. बट आप ये कर 5 मिनट ऑन कर दीजिएगा उसके साथ. मैम किसको ऑन करना पड़ेगा मैम, किसको? पार्डन? किसको ऑन करने के लिए बोले? S3 से S4, R3 से R4. आई एम सेइंग दैट कि निफ्टी में आप ऑन कर सकते हैं, ऐसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे. बट एक बार बैक टेस्ट कर लीजिएगा, बट उसमें क्रॉसओवर जरूर ऑन कर दीजिएगा कि 5 और 200 का अगर क्रॉसओवर हो रहा है तो उसके ऑपोजिट ट्रेड ना हो. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. मैम उसे हम प्राइम टाइम में ऑन कर सकते हैं ना, उसके बाद बंद कर सकते हैं. सॉरी, जब आप कोई भी ऑफ टाइम, अगर आप यहाँ पे ऑफ टाइम कर देंगे तो जो आप ऑफ टाइम रखेंगे उस टाइम सिस्टम ट्रेड नहीं लेगा. So it's better to on S3 to S4 on prime time. Yes, you can. Ma'am, here do you get any? Sorry, I did mute all because there was lot of noise. Yes, tell me. Ma'am, can we use this algo for the stocks R4 breakout? Yes, you can. अगर आपको कोई स्टॉक मिल गया है, जैसे आपने ब्रेकआउट स्टॉक मिला है, अगर उसने R4 ब्रेकआउट अभी नहीं दिया है, अभी उसका R4 ब्रेकआउट होना बाकी है, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि वो R4 ब्रेकआउट दे मैं सिस्टम पे रहूं, आप इसमें बाकी सारी जोन ऑफ करके R4 से R5 और R5 से R6 जोन को ऑन करके अपने एल्गो सेटअप ऑन करके यू कैन गो डू योर वर्क. कि अगर उस स्टॉक में अपने आप R4 R5 होगा तो यू कैन टेक अ ट्रेड, सिस्टम विल टेक अ ट्रेड. बट उसमें ये है ना कि 0.236 लेवल टच करेगा तभी तो एंट्री लेगा ये. हाँ, तो आप छोटा आप अपना जो भी लेवल है आप 236, अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप इस लेवल को घटा भी सकते हैं, आपके ऊपर है, बट ट्राई टू मेक इट 236 के बाद ही ट्रेड हो. No, can we do it like that कि कैंडल क्लोजिंग के नहीं, बेसिस पे इसमें अभी वो वाला अभी मैं बनवा रही हूँ, वो सिस्टम भी आ रहा है जिसमें कैंडिला में होगा कि एक कैंडल क्लोज हो, नेक्स्ट उसका हाई ब्रीच करे, देन सिस्टम विल टेक दैट. आई एम वर्किंग ऑन इट, दैट विल बी आल्सो, वो भी ऐसा इंडिकेटर उसका भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा. ओके, थैंक यू. मैम अभी अभी आपने क्या बताया था, S3 S4 R3 R4 मैंने ये के बोला लिए था कि S3 S4 जो है, S3 जो S4 जो जोन है वो हम ऑन नहीं करते हैं जनरली, इज नो ट्रेडिंग जोन, पर आप निफ्टी में चाहे तो उसे ऑन कर सकते हैं प्राइम टाइम में, इट कैन टेक अ ट्रेड. और उसके साथ क्रॉस ओवर. हाँ, उसके साथ क्रॉस. मैम फ्राइडे का अल्गो देखिए, उसमें उस दिन निफ्टी में 4 ट्रेड आया था. अगर आप S3 S4 और R3 R4
ऑन कर देते हैं तो अब लास्ट में जो ट्रेड आया था वो डिजेबल हो जा रहा है, जो लास्ट में जो ट्रेड आया था। ठीक है, हाँ तो फिर एक मिनट, लास्ट में निफ्टी कौन, एक मिनट रुक के, अगर हम S3 S4 ऑन कर देते हैं, अगर हम इसकी टाइमिंग में देख लेती हूँ मैंने क्या रखी है 9:29, अगर मैं 9:15 से कर देती हूँ 9:29 ही रख लेते हैं हम। हाँ, वो लास्ट वाला ट्रेड जो है, जब लास्ट वाला ट्रेड तो S3 से R3 ट्रेड तो जाएगा ना, पर हम S3 से R3 ट्रेड हम जोन क्यों बंद करेंगे? नहीं, आप ऑन करके देखिए, वो मतलब नहीं दिखा रहा है, मतलब वो ग्रीन का ये जो येलो बार और पर्पल बार नहीं आ रहा है, वो डिजेबल हो जा रहा है। S3 S4 और R3 R4 ऑन कर कीजिए, वो नहीं दिखाएगा। वो इसलिए नहीं मेरे दिखा सिस्टम रहा है क्योंकि मैंने जो स्टॉप लॉस आपने शायद 3 कर दिए होंगे, और उसमें अगर आपने ये जोन ऑन रखे तो ऑलरेडी सिस्टम ने 3 स्टॉप लॉस हिट कर लिया, और 3 स्टॉप लॉस के बाद सिस्टम ट्रेड नहीं लेगा। ओके ओके ओके। क्योंकि उसका एक टारगेट हिट हुआ, एक ये वाला जोन हमने मिस कर दिया, एक टारगेट हिट हुआ, एक स्टॉप लॉस, फिर दूसरा स्टॉप लॉस, फिर एक तीसरा R4 ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस हो गया, तो इसलिए 3 स्टॉप लॉस के बाद सिस्टम ट्रेड नहीं लेगा, इसीलिए नहीं दिखा रहा। अगर मैं ये डिसेबल कर दूंगी तो इसके 1-2 स्टॉप लॉस बंद हो जाएंगे, तो जैसे उसके वो स्टॉप लॉस कम हो गए तो सिस्टम विल टेक अ ट्रेड। मैम लगता है 9 बजे में एक स्टॉप लॉस हुआ था, मैंने 9 बजे के कैंडल में एक स्टॉप लॉस हुआ था, एक बार आप देखिए। 9 बजे की कैंडल में कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ था, 9 बजे की कैंडल में एक ही ट्रेड हुआ था, ये वाला मतलब ऊपर गया था, हमारा एक ही ट्रेड हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 9:45 की कैंडल पे एक येलो निशान दिखा रहा है छोटा सा, 9:45। आई डोंट नो, मैं अगर उसको 9:15 पे भी ऑन कर देती हूँ तो ऐसा कोई ट्रेड नहीं था, उसका टारगेट हिट हुआ था एक, लेट मी सी व्हाट मेरा 9:15 पे, तो ये ट्रेड हुआ था, इट हिटेड द टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूटेड एट दिस 9:52 जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अच्छा अच्छा, तो मैम एक बार S3 S4 को एक बार अगर आपको ऑन भी करना है तो एक बार बैक टेस्ट कर लीजिए, व्हेन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस विद द बैक टेस्ट, देन उस जोन को ओपन करिए। मेरे सजेशन से आप ओपन कर सकते हैं। ये होगा कि कभी ऐसा ना हो कि आपके लॉसेस हो जाए, तो इसलिए जितना जो भी आप जोन ऑन करना चाहते हैं, जस्ट डू द बैक टेस्टिंग। एक बार इस सिस्टम पे थोड़ा टाइम लगाइए, थोड़ा समझिए, तो कि सो दैट यू गेट अ मैक्सिमम कॉन्फिडेंस दैट get own the system, क्योंकि बैक टेस्टिंग विल गिव यू कॉन्फिडेंस बाय ओन टू ओन द सिस्टम। मैं थोड़ा बैक टेस्टिंग किया, मैंने मोटा मोटी आपका 10-12 दिन का बैक टेस्टिंग किया, तो मैंने देखा कि जब जब मार्केट निफ्टी में वोलेटाइल रहता है तो S3 S4 ये कंफर्म नहीं होता है। हाँ, तो डोंट ऑन दिस जोन फॉर स्टार्टिंग। अभी आप स्टार्टिंग में जो जोन ऑन करना चाहते हैं, जस्ट कीप दिस जोन ओपन, जो हमारी मैक्स ट्रेडिंग जोन है, आप सिर्फ ये ऑन करिए और अपनी ट्रेडिंग ऑफ टाइम को ऑफ करिए, 1-2 दिन को समझिए, ट्रेड लीजिए, देन अगर आप देन इंक्रीज द थिंग्स, क्योंकि वी हैव टू टेक ओनली कंफर्म ट्रेड। ओके, थैंक यू। हेलो, यस हाँ मैम, इसमें ये पूछना था कि जैसे ये पॉइंट्स दिखाता है कि क्या कहाँ पे एंट्री हुई है और एग्जिट हुई है जब ये ट्रेड लेता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे ये मतलब ये पॉइंट्स दिखा दे, ट्रेड खुद ना ले, और उस एंट्री पॉइंट के बिहाफ पे हम खुद ऑप्शन सेल कर लें, ऑप्शन बाय ना करके ऑप्शन सेल कर। यू कैन, जैसे आप इसका, मैं अभी बोल रही थी कि अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते हो कि वी बुक ट्रेड ले, आप इस अलर्ट पे जाके आप अलर्ट क्रिएट कर दीजिए, आप ये वी बुक वाली एंट्री हटा दीजिए, आप ये रख लीजिए, तो जैसे ही सिस्टम टच करेगा इट विल शो यू द पॉपअप, जैसे आपके पास पॉपअप होता है आप खुद ट्रेड कर सकते हैं। हाँ ठीक है मैम। तो मैम अगर लास्ट क्वेश्चन, मैम अगर यस, कोई बात नहीं, वी बुक ऑफ कर दिया तो दैट टाइम कैन वी, आई मीन obviously we can do like manual trading, right? तब तो वो अगर पॉपअप आएगा भी तो then we can use our manual trading हाँ, like you can, बिकॉज़ वो पॉपअप आएगा ना, वो सिस्टम आपके सिस्टम में ट्रेड नहीं लेगा, अगर सिस्टम आपके ट्रेड में नहीं ले रहा, आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं ले रहा, तो यू कैन डू द मैनुअल ट्रेडिंग। okay मैम।
वीबुक यही है कि आपने जैसे ही अलर्ट क्रिएट किया, अलर्ट करके आपने मेरे वाले चैनल मतलब मेरे वाले टूल पे अलर्ट लगाया, तो आपको यहाँ पे वीबुक यूआरएल को क्लिक करना है। जैसे आप वीबुक यूआरएल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक यूआरएल डालना है जो मैंने अपने मैनुअल में दे दिया है, tv.stocksdeveloper.in, देन क्रिएट करना है। अगर आप ये वीबुक ऑन नहीं करेंगे और आप यहाँ पे अपना लिंक नहीं डालेंगे तो आपके सिस्टम में ट्रेड नहीं होगा। आपका सिर्फ अलर्ट क्रिएट होगा, बट आपका ब्रोकर साइट पे ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये जो वीबुक है दैट कम्युनिकेट विद स्टॉक डेवलपर एंड देन स्टॉक डेवलपर टेक अ ट्रेड इन योर ब्रोकर साइट। So clear till here, or then we can talk about the option. Ma'am, one more question on this algo. Yes. Is there is a way to, when we are doing this bar replay in TradingView, now can we do any paper trading, that is like capturing in the Trade Plus? You can do the paper trading. There is an option of a paper trading in TradeView. अगर आप यहाँ पे इनका पेपर ट्रेड का ऑप्शन होता है, तो I'll check it out कि इसको आप कैसे कर सकते हो इस टूल पे। I'll let you know. Okay, ma'am. इनका पेपर ट्रेड का ऑप्शन Ma'am, it is inside trading panel. Yeah, downside trading panel. There is a paper trading option. Yes. हाँ, you can start. तो अगर आप यहाँ पे कुछ अगर स्टार्ट कर सकते हैं, इस पे आप अपने टूल पे लगा सकते हैं शायद पेपर ट्रेड का ऑप्शन। इसको मैंने कभी इस पे पेपर ट्रेड किया नहीं है। We can do right click and trade, so it will go to paper trade. Here in the tool. Yeah, on the chart, जैसे ही हम राइट क्लिक करके और ट्रेड करेंगे तो ऐड हो जाएगा ऑप्शन, एंड ऊपर भी बाय और सेल का ऑप्शन है। वहां पे जो प्राइस दिख रहा है जस्ट निफ्टी 50 1 मिनट चार्ट के नीचे, वहां पे अपन अगर बाय करते हैं। मैम मैंने चार्ट में उसका लिंक भेजा हुआ है, किसी को चाहिए तो इजीली मिल जाएगा। ओके। Is it possible to integrate the script to take order on the paper trade instead of the broker? I'll check it out. I'm not sure about it. I'll check it out. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, we created the alert today. So tomorrow, should we log in or it will automatically take the trades? It will automatically take the trade. There's one option in the that you can check the trade the history of that indicator. I'll check it out if we can work in that in my indicator. That if you open the indicator, if you check the history, it will show you how many trade happen and how many trade gone. So I'll check it out of that. Okay, thanks. Madam, so this is madam, can you suggest to use trade-off timings daily? Pardon, I didn't get you. Can you suggest to use trade-off timings daily? Trade-off timing, then you don't need to make any setting. If you done the setting once, it will work as per that. What is your suggestion, madam? Which also I suggest you trade-off timing should be 11:30 to 1 or 1:30. Okay, thank you. Prabhu, can I ask you one thing? Are you attending the webinar or Chitra is attending the webinar? Because sometimes you ask the question, sometimes Chitra asks the question, or both of you are attending the webinar? We both are attending, and that's really great. Yeah, your setup, I am taking the trades and Prabhu is working, so he will take sometimes he'll be in office, like that. Actually, that is really great when I feel like we both of you are interesting in one field. That really motivate.
Yes. Yes. Thanks, ma'am. And actually, I was quite interested on this algo, and this seems to be nice setup, ma'am. Thanks Great. again. And like I am only doing time. Prabhu is like whenever he's free till afternoon he's free. So that time he will. Because I sometimes ask my husband to. He have very little interest in these things. He's very happy in his job. He's in IT sector in a very good position. Sometimes I ask him to tell you sometimes he's always say you take care of your things. I'll take care of my thing. In one He's way, into investing. He's very much into the investing. He's a very good investor. He's doing his investing, but he's not into because he's not getting time because his schedule is too tight as per that. So no, he's not that much into the trading, but he's very good into the investing. So sometime I ask talk to him about my day trade and all. He's show no interest. He's saying, I know you are doing good. Just let me know whenever you need my help. I'll be there to help you out, but let me keep separate from this. In one way, it is good, but He actually has he's into a job and he's very much I know his schedule is too busy from his job, so I don't want your day trading. He can't get the time for these things also. More than that, we have kids also. Yes. So now, if your question has been clear on the algo, so one thing. Can we talk Last about the one. option trade? Hello. Or anybody have still any question? Oh, ma'am, can you hear me? Yes, I can. Yeah. I mean, I was just going through the charts while you were speaking, and then I was trying different values and things. So on a trending day, it's a very good trending day. Assume that okay, we have taken. I mean, the alert has taken an entry, and we know for sure that the target is going to be way beyond even the 1 mark on the fib chart. So it's going to go into 1 point, more than that. So that day you can do one thing. You can change your setting and you can recreate the alert. Okay, so in between as well we can change it, right? Yes, you can change your setting in between and you can recreate the alert and the system will exit with the new alert. Okay, perfect. Thanks. You can do that. Ma'am. Let's talk about the option now. Ma'am, one question. As you said, we can change. So if you are going up and you can tail your stop loss again, our side here also. No, you can't trail the stop loss because the stop loss will be only calculated on the base of multiplier. Mean the S3 अगर आपने S3 breakout ले दिया है और the point you are giving it will only calculate with the S3 के नीचे 10 point 4 point 5 point whatever point you are giving it will only calculate with the S3. It won't calculate with the help of target and stop loss, so you won't be able to trail it. Thank you. So what is option trading? May I ask you one thing? How many? I think most of you do option trading. I don't think so. Very less. Nobody is here who is not doing option trading. How many of you have started trading on the option and after studying about the option, like what is option, how to take a trade, what is call option, what is push option, what is delta, what is gamma, what is theta? How many have you learned about option? A little bit, not all study. I'm not asking for the deep detail. How many have you studied little bit of option before taking any trade in the option? Yes, ma'am. I have done the study. Good. Rest of? Even me, madam. I have studied in detail. You study the detail? Yes, madam. I have been through delta, gamma, theta, rho, and all those aspects of options. I know all of those. That is really good. Or how many have you did the first trade in option without knowing? Acha, Vinay say I did without knowing. Okay. And without knowing anything, what is option? Just you know that the option is something where you can put a small amount of money and you can earn the very big amount. Because आप 10,000 से 20,000 कमा सकते हैं. ऐसा सोच के how many people have traded the option?
Be मैंने honest. किया था मैं, एंड Good. ऑप्शंस ने मेरे एक साल में अबव 10 लाख रुपीस लॉस किया मैंने मार्केट में। ऑप्शन यही होता है। मैंने यू पीपल हैव सीन माय शॉर्ट वीडियो जो मैंने शायद लास्ट वीक में डाली थी, वेरी स्मॉल शॉर्ट वीडियो। उसका जो मैंने उसमें जो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर थिंक अबाउट द मार्केट लाइक दिस ओनली, कि मार्केट इज लाइक अ ATM मशीन, यू विल पुट द पिन एंड यू स्टार्ट गेटिंग द मनी। मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर, और तभी मैंने ये डाला था क्योंकि मुझे आई हैव सीन ऑफ समवन वीडियो लाइक दिस ऑफ सम it was not my idea, I won't say that it was my idea. I've seen someone, one of a foreigner investor, she's a lady, she made this short video and liked that her idea and I wanted to convey that message, so I made that short video. And most of the new traders hote hain na, wo always think like that ki the stock market is a method to earn the quick money, and option is the something which can make you rich very quick. Most of the new trader always think like this before entering into the stock market. I hope you people are agree with me. Yes ma'am. That's true ma'am. That's true. So but वही होता है ना, बतने आते हैं उनको लगता है कि very quick. I am planning to make 2 short video more जो छोटी छोटी हैं, जो आपको बहुत अच्छा ज्ञान देंगी, तो you should go through that. मेरे को ना I love making this kind of video because मुझे लगता है strategy is something which can anybody can teach you, but this kind of knowledge should be there for the trader. That's why I love making this kind of video. I started making one video every week. I hope you people are liking that video, the way the things I wanted to convey to you people. I think I'm able to convey my message to you. So always in the market, you can't make a quick money in the market. If you want to make a money, you have to do a hard work. You have to make yourself expert in something, because लोगों को क्या लगता है, whenever you are in the stock market, you can be a profitable very soon, and it takes time. अगर आप किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से बात करेंगे ना, इफ यू टॉक टू एनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इफ यू विल आस्क हिम कि हाउ मच टाइम he or she took to be a profitable trader, he will definitely say 2 to 3 years. Nobody will say that 6 months, nobody will say that. Few traders must be there. I know I have no 1 or 2 traders who became the profitable in 6 months only, but maximum trader will say you that it took them max near about 2 to 3 years to be a profitable or a break-even trader. Even me, I took 3 years to be a profitable trader. In 2 years, I was a break-even trader, but after 1 year, I was a profitable trader. So it was a 3 long year process which I had to follow to be a profitable trader. And I have also gone through all the things you must have gone through. I feel frustrated whenever I make losses. I feel disheartened. My family have seen my frustration, and because whenever I used to make losses, my mood is off. I used to put my frustration on my husband, on my family. I've also gone through this thing. So that is happen in your trading. But the one thing you have to do is you never quit. Just make your determination, make your hard work should be there, so that will give you one day, और वो hard work एक दिन pay करता है. You example is there. I am there in front of you. This 10 year of hard work made me here where I can make a profit and I can help other to teach the trading. So that should be, you have to work hard on that. So we will talk about little bit more about the psychology in the between. ज्ञान तो चलता रहता है. Now let's talk about the options. What is option? Why the option was invented? Basically, the option was invented to hedge the position. Mainly क्या होता है, जो big players, the big traders होते हैं, whenever they can trade in any equity, whenever they trade in any future, they make it to hedge their position. Hedging मतलब अगर आपने मैंने कोई trade लिया, I want to hedge my position. For the hedging, they invented the option. And the future was invented because in equity, you can't create the short position. You can create the short position in intraday, but you can't
carry the short position for overnight, क्योंकि आप sell करके stock को overnight नहीं लेके जा सकते हो. You can, अगर if you sell the stock and you want execute your trade by EOD, and the next day the stock will go in the auction. So to get the short position in the stocks and something, they have invented the future so that you can carry your short positions. So for that purpose, the option and future was invented. So option में basically होता क्या? What is option? We have to get the obligation of the contract. Like I'm a bullish for the market. I'm bullish for something stock. मैंने Reliance को लेके bullish हूँ, ठीक है? I know that Reliance will go and touch 2500. But I don't have that money. I can buy Reliance. So what I'll do? I'll buy his option. When I'll buy his option, I get the obligation. I get the contract. I'm the owner of the Reliance, but not directly. Indirectly, I'm owner of the Reliance stock, but not directly, indirectly, because I can't get the dividend at all. I'm not their shareholder, but indirectly, I'm taking the contract that if the Reliance will go to 2500, I'll get the profit. I'm buying the call option. In the call option, what will happen if the Reliance will go in my favor? I'll make a money. Instead of buying a stock, I took the contract of option. Now, if the stock will go in my favor, if the जो भी मैंने अभी I have understood the price action of the Reliance, whatever I understood the price, if it's go in my favor, then I will make a profit. So the option what is the benefit of option? Instead of buying the stocks or buying the future or buying the indices, we are buying the call or put option so that we can make a money if the things will go in our favor. And that required less margin also. So this is the call option and put option. When we are bullish for the market, we buy the call option, and when we are bearish for something, we buy the put option. Okay. What is option buying? What is option buying and option selling? What in the short form, what I say about the option buying and option selling is that in option buying, you pay the premium, and in option selling, you get the premium. What I mean by option buying and option selling, pay the premium and get the premium से मेरा मतलब क्या है? That if you have 100 rupees option, ठीक है, आप bullish हो बैंक निफ्टी को लेके, you want to buy a call, तो ये call आपने 100 rupees के call buy कर ली. What you are doing? You are paying the premium. You are giving 100 rupees premium that to buy. I am bullish for the bank nifty, but I can't buy the bank nifty. I can't buy the bank nifty future. I'm buying the call option and paying the 100 rupees premium to you, that if the bank nifty will go up, this 100 rupees will be yours. But above that, जो भी मेरा ऊपर जाएगा, जो भी मेरा benefit होगा, that will be mine. Okay. अगर आपके फेवर में चला जाता है, अगर वो बैंक निफ्टी आपका फेवर में चला जाता है, वो आपको 50 रुपीस और मिल जाते हैं और ये ऑप्शन 150 की हो जाती है, what will happen? This 50 rupees will be your 50 rupees profit will be your, and that 100 rupees premium is safe. Your premium is safe. But अगर उल्टा हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, तो what will happen? This 100 rupees will become 0, and this you have paid that 100 rupees जो आपने प्रीमियम दिया, that will become 0. तो आपका प्रीमियम आपने उसे पे कर दिया. So maximum आपका लॉस कितना होगा? Maximum loss will be 100 rupees because you have paid that premium, and that premium will go 0 if the things is not going in your favor. And if the things are going in your favor, तो 100 rupees के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी वो 100 rupees के ऊपर वो ऑप्शन एक्सपायरी होगी, that is your profit. But that 100 rupees the premium you are paying, that will be broken if the thing, that will be for the, if the things are not going in your favor, otherwise that 100 rupees is safe. So what is the benefit of option? That you can trade with a limited capital. आप 10,000 20,000 से भी trade कर सकते हैं. Okay. The risk involved is very limited because the whatever premium we are paying, we are at risk of that premium, and the option buyer have the opportunity to earn unlimited profit. क्योंकि जितना ज्यादा अगर ऊपर जाएगी मार्केट, जितना ज्यादा हमें प्रॉफिट ऊपर जाएगी, हमें उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा. तो that is our unlimited profit. What is option seller? Option seller are getting the premium. Option buyer are paying the premium. Option seller are getting the premium.
आपने कोई आप बुलिश है मार्केट को, आप इंस्टेड ऑफ बाइंग द कॉल यू हैव सोल्ड 100 रुपीज की पुट आपने सोल्ड कर दी. This 100 rupees will be in your pocket. This 100 rupees is in your pocket. Maximum profit you will get is this 100 rupees because अगर आपके फेवर में चली गई तो ये 100 rupees अगर मार्केट आप बुलिश है और ऊपर चली गई 100 rupees will become 0 and this whole 100 rupees in your pocket. You won't get more benefit. You will get this 100 rupees because you are getting this premium. ठीक है. Losses will be unlimited because जितना ऊपर जाएगा जितना ज्यादा ये ऊपर जाएगा that is your losses. Okay, so why that the benefit of benefit option selling, like if the option goes 0 you will get the benefit when the spot price near expiry. मतलब बेनिफिट ऑप्शन बाइंग के और सेलिंग के, सेलिंग में सिर्फ 2 ही बेनिफिट होते हैं क्योंकि हमारे पर केस में होता क्या है, अगर आपने कोई बाय किया, आपने कोई सोचा कि भैया मार्केट विल गो अप और डाउन, आप यू हैव मेड assumption and you have traded, what will happen? Either the price will go in your favor or the price will go against your favor or the price will won't do anything and consolidate. ठीक है. In the case of option buying, you will only get the benefit when the price will go in your favor. Okay. In the case of consolidation also, you won't get any benefit. Okay. But in the case of option selling, you will get the benefit if the price will go in your favor or if the price consolidate. In both cases, you will get the benefit. You will only get the loss when the price goes against your favor. But in the option buying, in the case of consolidation also, or in the case of going against your favor, both of the case you will make the losses. So there are chances of getting the profit in the option selling are 2. And but in the chances of getting the profit in option buying is only 1. Okay. So this is the difference between option buying and option selling. Calculation of call and profit and loss, that is only on the day of expiry. इंट्राडे में जो होता है वो डेल्टा के ऊपर होता है कि जितना ज्यादा डेल्टा होता है उस ऑप्शन के अंदर उतना ज्यादा वो एक्सपायर हो जाता है. अगर कंसोलिडेट होता है तो थीटा के ऊपर होता है कि कितना उसमें टाइम वैल्यू, एज पर दैट द प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड. ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ये होता है कि अगर आपने कोई ऑप्शन लिया है, जैसे आपने ले ली 15,700 की आपने ऑप्शन लिया, आपने मार्केट चल रही है, जैसे अभी मार्केट चल रही है 17,400 पे, ठीक है मान लीजिए, और आपने ले ली 17,400 के ऑप्शन बाय कर ली और मार्केट एक्सपायर हो गई 17,600 पे, आपने ऑप्शन ली थी 100 रुपीज की. नाउ द ऑप्शन प्राइस इज 200 रुपीज, द गैप बिटवीन दिस इज 200 रुपीज, तो दैट 100 रुपीज जो आपको प्रीमियम बचा दैट विल बी योर प्रॉफिट. सो दिस इज अ वे ऑन द एक्सपायरी पे भाई कैसे कैलकुलेट होता है. जो करंट प्राइस है, जो करंट एक्सपायरी प्राइस है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, माइनस जो करंट एक्सपायरी प्राइस है और जो स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया है, जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किया, उन दोनों में जितना भी डिफरेंस होता है उतने की आपकी ऑप्शन हो जाती है, माइनस द प्रीमियम यू हैव पेड फॉर द ऑप्शन, दैट विल बी योर प्रॉफिट. ठीक है. दिस इज ऑप्शन चेन. मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ऑप्शन चेन के बारे में. दिस इज ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट इज द करंट ओपन इंटरेस्ट. This is a current open interest. It is now in the size of load. पहले ये number of contract होता था तो number of कितने होते थे load, मतलब अगर यहाँ पे हम open interest देखेंगे, if we want to see the open interest of this option, this is 47,518 plus into 50. ये multiple of load size होता है. पहले ये load size नहीं होता था, पहले ये नंबर ऑफ ऑप्शंस होती थी कि अगर ये 47,000 होता है तो ये 47,000 ही होता था. नाउ इट्स इक्वल टू लोड साइज की 47,000 लोड्स का इस पे ओपन इंटरेस्ट है. ठीक है. दिस इज ओपन इंटरेस्ट. चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मीन जो डेली हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है वो वॉल्यूम, इसके अगेंस्ट कितने लोगों ने किया, दैट इज अ वॉल्यूम. आईवी इज इम्प्लाइड वॉलिटी, मतलब कितनी ज्यादा ये वॉलिटिटी, कितनी ज्यादा ये वॉलेटाइल हो सकती है कि अगर मार्केट अगर जितनी मूव करती है उसके अगेंस्ट कितनी ज्यादा ये ऑप्शन वॉलेटाइल हो सकती है, दैट इज इम्प्लाइड वॉलिटी. लास्ट ट्रेडेड प्राइस मीन द लास्ट प्राइस ऑफ दैट ऑप्शन जो अभी ट्रेड चल रहा है. चेंज कितना प्लस माइनस हुआ है दैट ऑप्शन में, दैट इज चेंज ऑफ. बिट क्वांटिटी, कितनी मैक्सिमम बिट क्वांटिटी, मतलब एक बंदे ने कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी इस ऑप्शन पे ट्रेड करी हुई है.
ठीक है, बिड प्राइस कितना एक मतलब बायर और सेलर ने उसके मैक्सिमम प्राइस को बिड किया हुआ है। आस्क प्राइस कितना, मतलब बिड प्राइस मतलब जो बिड लगी है, और आस्क प्राइस जो सेलर आस्क कर रहा है। जैसे ये सेलर बिड प्राइस को, बिड प्राइस होता है सेलर का, आस्क प्राइस होता है बायर का, कि बायर उस ऑप्शन को कितने प्राइस में बायस करना चाहता है, और आस्क क्वांटिटी होती है बायर की। पता है यहाँ पे ये बता रहा है कि सेलर कितने लॉट साइज को बेच रहा है, और आस्क क्वांटिटी मतलब बायर कितने लॉट साइज इसको बाय करना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ 4 चीजों का इसमें ध्यान रखना है। ओपन इंटरेस्ट, कि इसके ऊपर किस ऑप्शन के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब आज के दिन में हाउ मच ओपन इंटरेस्ट हैज बीन जनरेटेड ऑन दैट ऑप्शन प्राइस। एंड implied volatility, how much price is volatile, and the last traded price, that what is the last traded price of that option. Clear till here? Yes, ma'am. Chalo. Guys, I'll be back in 1 minute, then I'll go outside. 1 second. Okay, so option buying ke maybe what point you have to take care when you have selecting the strike price on option buying. On Friday, Monday and Tuesday, always buy at the money or nearest in the money option. What I mean by at the money option, like suppose market is at 17,550 and you want to buy a call. What will you do? At the money is 17,500. Option is at the money call, or 17,400 is in the money option. So on Friday, Tuesday and Monday you can buy at the money आप कर सकते हैं. But on Wednesday try to go deep, like go for 17,400, or expiry also go for 17,400 और next week expiry, अगर क्योंकि अगर current day की expiry आती है, कई बार आपको losses दे जाती है, तो have to do that. On like in option से. मैम सॉरी टू डिस्टर्ब। मैम यहाँ पे जो एल्गो सेटअप सिखाया था आपने, तो मंडे फ्राइडे ट्यूसडे को वी कैन कीप इट 50 एंड ऑन वेडनेसडे मोस्टली इन द मनी लेगा वो, अगर उसमें अभी वो चीजें नहीं है, बट वो क्या करेगा, अगर 17,550 पे है और आपने 50 क्वांटिटी 50 करी है, तो वो 17,500 की ऑप्शन लेगा एवरीडे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो अगर आपको थर्सडे का, तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट आपके हाथ में, तो यू कैन चूज नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। तो इज इट एडवाइजेबल कि करंट वीक में हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का बाय करें? हाँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपको लॉस होगा, पर प्रीमियम तो मैम बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। हाँ, प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो अगर आप चाहें तो इस वीक की भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा मैम, बोल रहा हूँ कि एल्गो में क्या इन द मनी का कोई ऑप्शन है क्या? वो इन द मनी ही लेगा, बट अगर आप वहाँ 50 रखोगे तो वो नियरेस्ट इन द मनी लेगा। नियरेस्ट, या उसको 100 करना बेटर होगा? नहीं 100 करोगे तो फार चला जाएगा, 50 रखो। फार चला जाएगा वो। 50 रखो तो मैम वेडनेसडे को भी 50 ही रखें? वेडनेसडे को आप यहाँ स्लाइड में बता रहे हो कि 50, एवरीडे कीप इट 50, वो नियरेस्ट इन द मनी ले लेगा। डोंट गो फॉर 100 एनी डे, क्योंकि रोज ही 50 रखो ताकि आपका नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन ट्रेड हो। मैम
मैम हम ये एल्गो कमोडिटी में भी यूज कर सकते हैं? हाँ, just back test it. अच्छा, You can use in anywhere. क्योंकि one of my last time student told me that it work good in silver, so I'm trying to plan to open it in the silver. कमोडिटी में मैम फीबो बहुत अच्छा चलता है, मैंने देखा है। Yes. Vivo commodity में भी अच्छा चलता है और फॉरेक्स में भी अच्छा चलता है। और जो एल्गो है तो फीबो के हिसाब से भी लेती है ना ट्रेड? बट वो एग्जैक्ट फीबो नहीं लेती। फीबो मतलब जो स्विंग ट्रेड का फीबो होता है, ये फीबो करती है उसका कैमरीला का, तो देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो ऑलवेज गो फॉर आउट ऑफ मनी ऑप्शन, सेल एट द मनी एंड आउट ऑफ मनी ऑप्शन। मतलब अगर आपने 15,550 750 पे है मार्केट और आप अगर सेल कर रहे हैं तो गो फॉर 15,800 आउट ऑफ मनी, नियरेस्ट एट द मनी आउट ऑफ मनी। और या अगर आप सेल 15,900 तो हमेशा आउट ऑफ मनी ही जाना चाहिए, डोंट गो फॉर द इन द मनी। ठीक है। ऑन फ्राइडे एंड वेडनेसडे गो फॉर डीप आउट ऑफ मनी, मतलब 15,900 पे जाइए और एक्सपायरी सेल आउट ऑफ मनी ऑप्शन। जितना भी ज्यादा दूर का हो आप उतना दूर का ऑप्शन सेल कर सकते हैं, क्योंकि जितना आउट ऑफ मनी ऑप्शन होता है उतना अगर आप इन द मनी आप बाय करें, इफ यू आर गोइंग फॉर द इन द मनी ऑप्शन द डेल्टा इज हाई। डेल्टा मीन द डेल्टा इज देयर टू गिव यू अ प्रॉफिट एज अ ऑप्शन बायर। कल की वीडियो में मैंने बताया था। और अगर आप इन द मनी ले रहे हो तो डेल्टा इज हाई, सो इट्स मेकिंग अ प्रॉफिट इज chances making a good profit chances is high if you are buying a in the money option. Or when you are selling the option, you have to get the money, you have to earn the money from theta, and theta is always high in the out of money option. So if you are selling the option money, you have to get the value of time decay, then out of money option will give you the profit. Now let's talk about the hedging. पहले मैं यहाँ पे hedging बता देती हूँ, then we will go on sensible size and I will sensible पे नहीं, I will go to that Opstra पे भी कर सकते हैं, सेंसिबल पे भी कर सकते हैं, पर मैं आपको Opstra पे बता दूंगी, आप सेंसिबल पे सेम वे में कर सकते हैं। What is hedging? Hedging is used to trade to reduce the risk. मतलब हम hedging क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा लॉस कम हो। एज अ ऑप्शन बायर हमें hedging नहीं लगानी चाहिए, मैंने कल भी बताया था। एज अ ऑप्शन बायर हमें अपना स्ट्रिक्ट टू आवर स्टॉप लॉस रखना चाहिए, सो दैट वी कैन मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस। एज अ ऑप्शन राइटर और if you are taking any overnight position, then you should hedge your position. Okay. There are 4 type of hedging: hedge option buy, and then option buying and sell option, hedge option sell or buy option, hedge future with buy and sell buy call or put, और future and sell call or put। इसमें तीनों में आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है, इसमें नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको मार्जिन बेनिफिट कम मिलेगा। Okay, so one second. I'm getting my tea. The weather is cold here. So ऑप्शन बाइंग एंड सेल ऑप्शन, व्हाट आई मीन बाय बाइंग, वैसे ये बाइंग के ऊपर आपको हेजिंग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर बाइंग द ऑप्शन यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर स्टॉप लॉस, दैट इज गुड फॉर यू। सो इफ यू आर वांट टू हैज, व्हाट यू कैन डू बाय एट द मनी ऑप्शन। आपने मान लीजिए 15,000 आप पुलिश है, 15,550 पे मार्केट है, ठीक है। यू आर बाइंग 15,500 के, आपने एक कॉल को बाय कर लिया। टू hedge your position, what will you do? आपने थोड़ी सी दूर 15,700 के कॉल को सेल कर दिया, तो दैट इज will hedge your position। ठीक है। सेम ऑप्शन सेलिंग में आपको hedge करना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में hedge करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ऑप्शन सेलिंग में आप कैसे hedging करेंगे? सेम वे, आपने कोई एक ऑप्शन को सेल कर दिया, हम अब थोड़े आज के करंट प्राइस पे ही आ जाते हैं। 17,500 पे आपकी मार्केट है, 550 पे आपने 17,600 की कॉल को बाय कर सेल कर दिया टू यू आर bearish for the market and you have sold 17,600 की कॉल आपने सेल कर दी। टू hedge your position you have to go little bit far, आपने 17,800 की कॉल को बाय कर लिया।
तो इट विल हैपन, अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपकी जो पोजीशन है हेज हो गई, आपको इतना लॉस नहीं होगा, जितना अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, एक लिमिटेड लॉस होगा। और इस केस में आपको एक मार्जिन बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि यू आर डूइंग द हेजिंग। आपको जो 1,60,000 एक ऑप्शन सेलिंग करने के लिए देने हैं, आपको उतने नहीं देने, यू हैव टू गिव ओनली you have to give only 30,000 rupees, उसमें आपकी hedging चल जाएगी। तो you can hedge your position like this when you're doing the option buying and selling. Hedge future with call, like you are bullish for the market, या मैं आपको Mobstra पे पूरा दिखा दूंगी। By bullish for the market, आपने future को buy कर लिया, you have buy the future। अब आप bullish है, आपने future को buy कर लिया। Now to hedge your position, what will you do? You will buy the put, क्योंकि हमें अगर नीचे आ गई तो हमें पुट बेनिफिट देके जाएगी। टू हेज योर पोजीशन व्हाट विल यू डू विल बाय द पुट, ठीक है। तो दिस इज अ वे यू विल हेज योर पोजीशन। ये जो इसमें मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि इसमें आप सेल कर रहे हैं ऑप्शन को। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ हेजिंग? दिस इज माय वन ऑफ फेवरेट हेजिंग। मैं यही हेजिंग ज्यादातर करती हूँ कि आपने आप बुलिश है मार्केट को लेके, आपने उसको बाय कर लिया फ्यूचर को, बट to hedge your position what I'll do, I will sell the call, मैं कॉल को सेल कर दूंगी कि अगर उल्टा पड़ जाए तो वो जो सेल करिए कॉल वो मुझे बेनिफिट दे जाए। सो दिस इज द हेजिंग, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। सो यू हैव टू पे द मार्जिन ऑफ 1, मतलब अगर आपने फ्यूचर बाय किया तो जो फ्यूचर के लिए मार्जिन है ना उसी में आप दोनों कर पाएंगे, पर आपको वो मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा जो ऑप्शन बाय का मिलता है, जैसे 30,000 35,000 में आप कर सकते हैं, वो चीज नहीं मिलेगी। बट in the case you can use a one margin, मतलब one options जो आप future buy करने का margin है उसमें आप दोनों कर सकते हैं। तो this is the hedging where you are buying the future, or to protect your future, to hedge your position, you are selling the option। अब मैं इसको थोड़ा ऑप्स्ट्रा पे बता देती हूँ आपको। सी जैसे आपने यहाँ देखा यू आर बुलिश फॉर द निफ्टी, ठीक है, आपने फ्यूचर को बाय, पहले हम फ्यूचर की हेजिंग कर लेते हैं। पहले आपने दिसंबर के फ्यूचर को बाय कर लिया 1 लॉट, आपने पोजीशन ऐड कर दी। अब आपको मार्जिन कितना चाहिए? 1,04,000 एस्टिमेट मार्जिन। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनडिफाइंड, आपका मैक्सिमम लॉस इज अनडिफाइंड, क्योंकि आपने फ्यूचर बाय किया। अब जितना ज्यादा फ्यूचर बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, और जितना ज्यादा फ्यूचर गिरेगा उतना ज्यादा आपको लॉस होगा। तो बोथ आर अनडिफाइंड, देयर इज नथिंग डिफाइंड इन दिस स्ट्रेटजी, बिकॉज वी डोंट नो कि व्हाट फ्यूचर विल डू, वेयर द फ्यूचर विल गो। नाउ आई वांट टू हेज माय पोजीशन, सो व्हाट आई विल डू, मैं एक आई विल ऐड वन ऑप्शन। मैंने अब आई एम बुलिश फॉर द मार्केट एंड अब निफ्टी चल रहा है हमारा 17,000 कितने पे, 400 पे चल रहा है ना समथिंग, ये रहा 4550 501। मैं आई एम बुलिश फॉर द मार्केट, व्हाट आई विल डू, आई विल बाय 17,600 की मैंने एक ऑप्शन को पुट को बाय कर लिया और आई एडेड दिस पोजीशन। नाउ व्हाट विल हैपन, आई नीड द मार्जिन ओनली 21,000, okay, and now my maximum loss is defined, my profit is still undefined, because as well as the future will go, I will take the profit, but my maximum loss, whatever was undefined before, now defined to maximum loss I will get is only 10,000 rupees, not more than it. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is hedging. Now, if you want to do hedge your position in option,
create a new strategy here. Now you are bullish for the Nifty. You are bullish for the Nifty and you are selling the option. आपने क्या किया? अभी आपने 17, जैसे अब हम करते हैं 16 दिसंबर की, आपने 16 दिसंबर की 17,000 तो आउट ऑफ मनी देख 17,500 की पुट को सेल कर दिया. You have sold the option. Okay. Now it's showing. Sorry, I buy the option. Sell करना था. So just press reset. I'll do that. आपने ऑप्शन लिया, आपने 16 दिसंबर का 17,500 का ऑप्शन को पुट को आपने सेल कर दिया. आई कैन रीसेट बट मैंने वो पेश कर दिया. ठीक है. यू हैव एडेड द ऑप्शन. You have sold. Now it's showing you maximum profit you will get 5,670 because इसका जो प्राइस है वो 113 है. 113 into 50. This is the maximum profit we will get in this option. Maximum loss is undefined because we don't know. We don't know where the it will go. We don't know our losses. So if the maximum losses is undefined and the margin requires is near about 1 lakh rupees. Okay. Now I want to hedge my position. What I'll do? मैंने 17,500 की पुट को सेल कर दिया. Now I'll go more out of money. मैं 17,300 की पुट को बाय कर लूं. मैंने क्या किया? 17,300 की पुट को मैंने बाय कर लिया. Now it's showing me maximum profit will be my 3,000 rupees क्योंकि मैंने hedge कर दिया. The profit is get less, but my maximum loss was undefined. But now my maximum loss is maximum 6,000 rupees, and the margin I required is only 26,000 rupees. So here I hedge my position. Ma'am, please it's hedging my buying only option and buying both. The buying both side option is not hedging. If you are buying the both side option, आपने एक side call buy कर ली, एक side आपने put buy कर ली, I don't call this hedging. There is no hedging of that. There is no margin benefit of that. There is no maximum profit or maximum loss of that. This is not called hedging. There is nothing like a hedging. You are buying both side of option. This is called when you are buying both of side option. You are waiting for the market. If the market will go one sided, and then I will get profit of one option and I will get the loss of another option. But this is not a hedging. So here you have sold one option and you have bought one option. So now your profit is defined, your losses is defined, your profit is defined. So this is, and you are getting the margin benefit. और दिस इज कॉल्ड हेजिंग. अब जितना पास की ऑप्शन में आएंगे, जैसे मैं इस ऑप्शन को जो मैंने सेल किया था, सॉरी मैं इसको जो मैंने ऑप्शन को बाय किया था, मैं इसका स्ट्राइक प्राइस चेंज करके थोड़ा पास ले आती हूँ. मैं 400 की ऑप्शन को सेल कर देती हूँ, बाय कर लेती हूँ. What will happen? My loss profit will get less and but my losses will also get less. मैं जितना ज्यादा पास की ऑप्शन आती जाऊंगी उतना ज्यादा मेरा लॉसेस भी कम होता जाएगा, उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट भी कम होता जाएगा. So that will give me less loss and less profit. The more I will come closer to the option. Clear? हाँ मैम, क्लियर तो हुआ है, पर अपने जो फ्यूचर का बताया ना वो एक बार बता दो. Okay. You are bullish for the market. आपने क्या किया? मार्केट को लेके आप बुलिश हैं, निफ्टी को लेके. What will you do? आपने फ्यूचर को you will do buy the future. Obviously you will buy the future. आपने एक पोजीशन क्रिएट कर दी. You bought the future. Now your profit is undefined. Your losses are undefined. The margin required is more than 1 lakh rupees. Because you don't know where the future will go till 30th of December, how much it will fall. So your future and profit, your profit and losses are undefined. ये profit और loss आपको expiry पे दिखाता है, उससे पहले नहीं दिखाता है. मतलब it shows you the profit and loss when the option will get or future will get expire. ठीक है. Now you don't know what will be your profit, when you don't know what will be your losses.
Now you want to hedge your position. You are bullish for the market. You have bought the future. Now to hedge your position, what will you do? You will buy the put. अपने 30 दिसंबर की 17,500 की पुट को बाय कर लिया. You have buy the put. आपने उस पुट को ऐड कर लिया. Now your position is hedged कि अगर मार्केट फ्यूचर नीचे भी आ जाता है तब the put will give you a benefit. The put will help you to reduce your losses. So now your profit is undefined because you don't know where the future, but your losses are defined कि maximum 13,000 से ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा. अच्छा मैम, ये 13,000 को भी आप माने घटा सकते हैं, माने 10,000 में भी ला सकते हैं. जितना पास का ऑप्शन बाय करेंगे उतना ज्यादा कम हो जाएगा, बट आपको 13,000 का वेट नहीं करना. अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर मुझे 4,000 से ऊपर इस डील में लॉस हो गया तो आई विल क्लोज माय डील. तो दैट इज द मैक्सिमम लॉस इज शोइंग यू कि मैक्सिमम अगर ये एक्सपायर हो जाता है द मैक्सिमम लॉस यू विल गेट ओनली 13,000. मुझे इसके पीछे जो मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म जानना है, जो कैसे ये रिड्यूस हो रहा है, कि लॉजिक क्या है इसके पीछे. लॉजिक ये है, जैसे आपने इसको 13,000, इसको आप मैं 17,600 कर देती हूँ. Your losses are reduced to 10,000 rupees. I'll tell you the reason. मैं आपको रीजन बता देती हूँ. आपका फ्यूचर अभी चल रहा है 17,501 पे, ठीक है. एंड यू हैव बोट द फ्यूचर ऑप्शन ऑफ 17,500 की आपने पुट को बाय कर लिया, ठीक है. और वो कितने पे बाय किया था, मैं इसको चेंज कर रही हूँ पहले. आपने वो बाय करी 247 रुपीज पे, नहीं सॉरी 202 रुपीज पे. ओके. यहाँ पे क्या हुआ, जब ये प्राइस ये जो आपका प्राइस है, अगर ये यहीं कहीं एक्सपायर हो जाती है, ऑप्शन यहीं कहीं आपका फ्यूचर यहीं एक्सपायर हो जाता है 17,500 के आसपास, या ये जो ये दिखा रहा है ब्रेक इवन पॉइंट हमें दिखा रहा है 17,493. अगर ये 17,493 से नीचे कहीं एक्सपायर हो जाता है हमारा फ्यूचर, व्हाट विल हैपन? You will get no benefit in any future. फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट योर ऑप्शन विल गेट एक्सपायर इन द जीरो. आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगी, जीरो एक्सपायर हो जाएगी. एक सेकेंड. सो द लॉस यू विल गेट इज, अगर मतलब ये सॉरी 17,000, एक मिनट, दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट. दिस इज 17,500, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है. इसमें क्या होगा, अगर ये हमारे यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा फ्यूचर एक्सपायर हो जाता है तो आवर ऑप्शन विल गेट जीरो. द मैक्सिमम लॉस विल गेट एज अ ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन में हमें लॉस हो रहा है वो, प्लस यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर में हमें जो 11 रुपीज का लॉस हो रहा है, दैट विल आवर लॉस. उसके अगर ऊपर, अगर प्राइस उसके नीचे कहीं एक्सपायर होता है, एक मिनट, sorry, I'll got confused in this calculation. 1 minute. 15. This is 14,500. हाँ, sorry, I got confused. अगर आपका यहाँ पे ब्रेक इवन का मतलब है, अगर आपका जो फ्यूचर है अगर 17,500 पे एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, you won't get any loss in any profit in future. You won't get any loss in any future in option, क्योंकि आपका ना फ्यूचर में कुछ हुआ ना एक मिनट यार, ये कुछ कंफ्यूज कर रहा है मुझे, एक मिनट. इसका लॉजिक अब है, अगर यहाँ पे 17,500 हो गया, बट हमारा ऑप्शन का तो हमारा लॉस होना चाहिए ना, 202 रुपये.
No मैम, एक्चुअली ऑप्शन में लॉस नहीं होगा बिकॉज वी बाय पुट, सो इन दैट फॉर्म ऑप्शन विल गेट मनी एंड इन फ्यूचर विल गेट लॉस, सो अगर ब्रेक हमारा इवन पे ही दोनों का। 70,500 पे फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा तो ऑप्शन भी तो जीरो होगी। मैंने 500 की ऑप्शन बाय करी है। टारगेट डेट देख लीजिए इसकी, वो एक्सपायरी दिन वाले दिन होगी ना। तो एक्सपायरी वाले दिन अगर मेरा 17,000, ये एक्सपायरी वाले दिन बता रहा है क्या? नॉट गिविंग मी अ राइट सिग्नल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखती दो डेट्स होती हैं, एक टारगेट और एक एक्सपायरी डेट, अलग अलग वैल्यूज आती हैं। I'm getting confused in that. ठीक है, मैं आपको अपने तरीके से समझा देती हूँ। I don't want to get into यही that. चीज मुझे पहली बार समझ में नहीं आई, यहीं पर ही मेरा। I'll explain you that how your profit and loss will be reduced. मान लीजिए आपने 17,511 पे आपका फ्यूचर चल रहा है, आपने फ्यूचर को बाय कर लिया, यू आर बुलिश फॉर द मार्केट, ठीक है। हाँ, नाउ आई गॉट पॉइंट व्हाई आई वाज कंफ्यूज, I'll go to point. आपने यहाँ पे 17,511 पे आपका फ्यूचर चल रहा है, आपने उस पोजीशन को हेज करने के लिए 17,500 की पुट को बाय कर लिया, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर तो आपके फेवर में चला गया, तो व्हाट विल हैपन, आपको जो फ्यूचर से प्राइस मिलेगा दैट विल बी योर प्रॉफिट, और आपका जो ऑप्शन का जो लॉस होगा दैट विल बी योर लॉस, और उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी। मान लीजिए हमारा जो फ्यूचर एक्सपायर हो गया 17,600 पे, हमारा फ्यूचर एक्सपायर हो गया 17,600 पे, तो हमारा कितने का हमें प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ 89 पॉइंट्स, 88 रुपीज का, 88 रुपीज का हमारा यहाँ प्रॉफिट हुआ। हमने ये ऑप्शन बाय करी थी, हमने 200 में बाय करी थी। अब ये ऑप्शन कितने की एक्सपायर होगी? 100 रुपीज की। वो जीरो हो जाएगा ना मैडम? नहीं, पी ना जीरो ये होगा, जीरो क्यों होगा? मेरा 600 पे एक्सपायर हो रही है, 500 है। वो पी है तो जीरो हो जाएगा, सी है तो सॉरी मैं कॉल सोच रही थी, सॉरी हाँ वो जीरो हो गया, सॉरी मैं भी सीखी कॉल, जीरो हो गया। नाउ हमारा सिर्फ 88 रुपीज का लॉस हुआ, ये जीरो हो गया, तो हमें 111 रुपीज का नुकसान हो गया। That given us a loss, but अगर मैं अब यहाँ पे, तो मेरा मैक्सिमम लॉस उतना ही, अगर मैं यहाँ पे 17,600 की पुट ले लेती, ठीक है, 17,600 की पुट ले लेती, और अगर यहाँ पे वो एक्सपायर तब भी 17,600 से होता, वो 17,600 की पुट मुझे मिलती 100 रुपीज में, क्योंकि वो उससे सस्ती होती, तो मेरा कितना नुकसान होता? 89 रुपीज का मुझे वहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मेरा 100 रुपीज का नुकसान हुआ, मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना होता? 11 रुपीज का। तो इसलिए हम जितनी ज्यादा नियरेस्ट इन द मनी, जितनी ज्यादा नियरेस्ट ऑप्शन लेंगे, हमारा उतना मैक्सिमम लॉस कम हो जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैडम। यस मैडम, वो स्टॉप लॉस तो वैसे हिट हो जाएगा। ये मैक्सिमम लॉस बता रहे हैं जब एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा। अगर आप बीच में अपना, अब एक और एग्जांपल देती हूँ, आपने लिया 17,511 रुपए का, आपने 17,500 पे बाय कर लिया, ठीक है, बाय किया, आपने उसके ऊपर 17,700 की, नहीं आपने दूर चले गए तो आपका लॉस कम, आपने 17,400 की, एक मिनट, पुट बाय कर ली आपने, इन द मनी पुट बाय कर ली, ठीक है। नो, दिस इज नॉट इन द मनी, आउट ऑफ मनी पुट बाय कर ली 17,000। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे ही कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि मैं ये ना बड़े दिनों के बाद ये कैलकुलेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं हैजिंग ऐसे लगाती नहीं हूँ, तो आई एम जस्ट लिटिल। दिस इज करेक्ट मैडम। The way I do 17,511 we can buy, 17,400 put we can buy. हाँ, तो even if market is at 17,500 and above, we can make profit. If market goes 17,400 and below, we can make money. उसका एग्जांपल में आ देती हूँ लॉस का।
आपने 17,511 पे आपने फ्यूचर बाय किया, आपने 17,500 की ऑप्शन बाय कर ली 150 रुपीज पे, ठीक है। मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट यहाँ पे 17,400 पे एक्सपायर हो गया आपका फ्यूचर। आपको फ्यूचर में कितना लॉस हुआ? 111 रुपए, बट आप ऑलरेडी 150 रुपए का प्रीमियम, आपकी जो ऑप्शन है वो भी 111 रुपए की बंद होगी क्योंकि आपने 500 की ली, अरे 100 रुपए की बंद होगी, तो आपको 100 रुपए का यहाँ पे 50 रुपए का यहाँ पे और नुकसान होगा, तो आपके यहाँ पे नुकसान होगा 161 रुपीज का। Either side it has to cross minimum difference amount, then only we can make profit. 17,500 की ऑप्शन लिया है, तो अगर ये 150 रुपीज है तो मुझे तब से प्रॉफिट होना शुरू होगा जब मेरा फ्यूचर 17,350 के नीचे एक्सपायर होगा, अदरवाइज मुझे नुकसान होगा। अदरवाइज मुझे नुकसान क्यों होगा? क्योंकि अगर मैंने 17,511 की ऑप्शन ली है और मार्केट प्राइस अगर जितना ज्यादा, क्योंकि मुझे उतना प्रीमियम, मुझे प्रॉफिट कब शुरू होना शुरू होगा? जब इन दोनों का जो गैप है, उन दोनों का जो गैप है वो गैप से ऊपर मेरा जाएगा। अगर मैंने 150 रुपीज प्रीमियम पे कर दिया है और मेरा प्राइस 350 से नीचे जितना जाना शुरू होगा, कि 150 रुपीज का गैप तो मैं ऑलरेडी प्रीमियम में पे कर चुकी हूँ, अब वो 350 से नीचे जितना जाना शुरू होगा उतना मेरा प्रॉफिट होता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम जितना 150 रुपीज के बाद 350 के बाद मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, 350 के बाद जितना फ्यूचर नीचे गिरेगा वो जो फ्यूचर का नुकसान होगा वो मेरी ऑप्शन कवर करती जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा अगर 350 से नीचे अगर मेरा फ्यूचर एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, 350 तक मुझे मेरा जो 150 है, मैंने 150 पे किया, बस वो मेरा सेफ रहेगा, बट मुझे फ्यूचर में नुकसान होता रहेगा। जब फ्यूचर 17,350 से नीचे जाना शुरू हो जाएगा, बाय इससे नीचे एक्सपायर होना शुरू होगा, उसके बाद मुझे नुकसान होना बंद हो जाएगा, क्योंकि 350 के बाद जितना फ्यूचर नीचे जाएगा उतना प्रीमियम मेरी ऑप्शन में ऐड होता जाएगा और वो मुझे प्रॉफिट देता जाएगा। तो इसलिए जितनी हम दूर की या जितनी हम पास की ऑप्शन लेते हैं, जितना हम प्रीमियम पे करते हैं, एज पर दैट प्रीमियम उतने गैप के बाद जब फ्यूचर गिरना शुरू होता है तो मेरा जो नुकसान है वो यहाँ पे वहां पे आके स्टक हो जाता है। क्लियर हुआ? यस मैम, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसको समझने में मुझे भी एकदम, क्योंकि मैंने भी बड़े दिनों बाद ये कैलकुलेशन करी है तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं एक बार फिर बता देती हूँ। आपने 17,511 पे आपने फ्यूचर को बाय किया और आपने 17,500 की कॉल को पुट को बाय कर लिया 150 रुपीज में। नाउ इफ द प्राइस इज गोइंग इन योर फेवर, तो आपको जितना ज्यादा ऊपर फ्यूचर जाएगा उसमें से आपका -150 होके आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर जितना ज्यादा दूर फ्यूचर एक्सपायर होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उसमें से 150 रुपीज माइनस हो जाएंगे। प्रॉफिट तो आपका अनडिफाइंड है क्योंकि आपको नहीं पता फ्यूचर कहाँ एक्सपायर होगा। अगर फ्यूचर जाके हो जाता है एक्सपायर 17,700 पे, तो 17,700 माइनस 511, जितना भी आपका प्रीमियम हुआ -150 रुपीज, ये आपका नुकसान हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नीचे हमें क्या होगा, नीचे हमारा एक डिफाइंड वैल्यू के बाद हमारा लॉस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर नीचे जा रहा है वो 17,350 के बाद हमारा जो 150 रुपीज जो हमने ऑलरेडी पे किए उसमें हमारा प्रीमियम ऐड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 500 की पुट है, अब ये 150 हो चुका है, अब ये 350 से नीचे 345 जाएगा, तो हमारा ये 150 की ऑप्शन 155 रुपीज पे एक्सपायर होगी। तो एक 150 पॉइंट के बाद हमारा जो एक जो लॉस है वो स्टक हो जाएगा। उसके बाद जितना भी फ्यूचर नीचे जाएगा हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे पास हमने एक अपनी इंश्योरेंस लगा दिया कि इसके नीचे जाएगा, तो इसलिए हेजिंग में आपको एक लिमिटेड लॉस होता है। क्लियर? Yes ma'am, yes ma'am. So I think this is done with the course content. जो भी मैंने आपको पढ़ाना था, everything is done. So now tell me, let's take the few question answers. 5:15 already.
to go. It's okay, I will go by 6. Just 6:30 I have to go for some of my kid work. He need to get his specs work done, so I have to go. So Can you teach that supply demand zone? How can we take the trade? okay, supply and demand zone पे मैं बता देती हूँ little bit. I'll open my supply and demand zone here. मेरे तो levels already. I always mark my level. I'm planning to recreate this name. No need to plan. Under supply and demand zone, if you want to take a perfect trade, अगर आप perfect trade लेना चाहते हो, what you can do, जैसे आपने अपने supply and demand zone mark कर दिया है, then you can do any 5-minute candle closing above that level. जैसे उसके ऊपर close होती है, the same way you are taking a Camarilla trade, और उसके बाद if next candle is breaching is high, then you can enter into the trade. It's the same way. Okay, ma'am. The same way, you just need to, जैसे आपने Camarilla में breakout breakdown stock लेते हैं, the same way you have to take a trade. Just just wait for any 5-minute candle strongly close above that supply and demand zone, and then next candle breaching high and low, then you can take a trade. मैम वो ग्रीन कलर का और रेड कलर का आपने क्या डिफाइन किया है? ग्रीन कलर का रेड कलर का यही होता है. ग्रीन कलर इज द जो मैंने इस नीचे ग्रीन कलर बनाती हूँ हमेशा, अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर नीचे होते हैं और रेड कलर ऊपर होते हैं. ग्रीन कलर में दिस इज अ डिमांड जोन कि व्हेन द प्राइस विल कम and touch this level, and then we can see the demand here. This is a buying box. When the price come and touch this buying level, we can see the buying and price can go up. That's why it's a green box. Red box is supply zone, and selling box. When the price will go up and touch this level, we can see the selling and the price can go down. इसलिए वो red box है कि वहाँ पे खतरे की घंटी है, प्राइस नीचे आ सकता है. ग्रीन बॉक्स है, यहाँ से प्राइस को एक पुश मिल सकता है, प्राइस ऊपर जा सकता है, इसलिए ग्रीन बॉक्स है. समटाइम ब्लू होता है, वो किस लिए होता है इंडिकेटर ब्लू का? मैंने तो ब्लू बॉक्स अभी नहीं बनाया. लगा ऐसे, चलो वो ऐसे अगर बस आप इतना कलर्स को छोड़ो, जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग. इफ द बॉक्स इज अबव द प्राइस, it's mean that is supply zone, that is selling box. If the box is below the price, that is buying demand zone, that is buying box. But you have to take care when the price is going down and touching that down box, means we can get the demand, we can see the buying from that level. If the price is going up and touching the supply box and the selling box, so we can see the selling from that area. So you just need to take care of that. There is no need to taking care of this is the buying, this is red color, green color. Just need to take care the price is above that, the level is above that price, or my level is below that price. मैम इसके साथ हम कैमरीला को कंबाइन करते हैं क्या? See, मैं जब कैमरीला से ट्रेड लेती हूँ, I always make sure कि आगे ऊपर बाइंग बॉक्स या सेलिंग बॉक्स तो नहीं है. अगर उसके ऊपर मुझे कोई अपना इंपॉर्टेंट लेवल मिलता है, तो I always try to book my profit or trail my profit from that level. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So guys, any another question? वैसे तो हम questions साथ साथ बहुत सारे ले चुके हैं, but if you have any another, yes. Ma'am, I was not present in the previous webinar, so I have one question related to that. Yeah. See, sometimes I usually follow Camarilla levels and I do trading based on that. But sometimes what happens that it crosses S5 or it goes out of those levels, and the market is sometimes very trendy, but it is going out of that S5 and R4. Sorry, R5, R6. One thing, and you can go for the supply and demand zone to take a trade, or you can trail your profit with the help of 5 EMA. No, you have suggested in one of your webinar that you can go to pivot traditional pivot points. Yes, you can do that also. अगर आप वो करना चाहते हैं वो भी, that you can go. अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर चली गई है, तो आप ट्रेडिशनल में भी चले जा सकते हैं, बट ट्रेडिशनल से अच्छा आप सप्लाई एंड डिमांड जोन विल गिव यू मोर एक्यूरेट एंट्री. तो अगर आपको वो नहीं, सप्लाई एंड डिमांड जोन नहीं आता, अगर जैसे R4 से ऊपर चलेगी, तो व्हाट विल यू go to the Camarilla, turn it to traditional and go for the traditional. You can go for traditional levels, pivot point also. That will also give you a good result. No, but ma'am, I want to ask you that how is the strategy for pivot point in traditional?
Like if it is breaking one zone, then it has to reach to the another zone. Is it like that? Yes. Okay. But I suggest you, instead of traditional, agar aapka R4, R5, R6, everything has been breached and you are not finding any level, then go for the supply and demand zone. That will give you more accurate. And Okay. if you are not able to mark the supply and demand zone properly, so then I'm sharing my level on a daily basis, so you can go for my levels. Okay. Okay. Thank you. Ma'am, one more thing. In the trendy days, no Nifty or Bank Nifty, it is a trendy market. So if the is falling falling from R3 to S3, S4, S5 in that days, I will usually book from R3 to S3. But after that, if it is going, sometimes it will retrace again till R2 also it will happen. So in that case, we'll book at S3 only. Again, it is falling from S3 to S4, S5, S6, it happens, no ma'am. So in that case, do we need to re-enter, right? Yes, you can re-enter, but if your market is trendy, your market is moving from S3, like R3 to R4, R3 to S3, then S3 to S4. On the S4 trade, always wait for the one retracement to take a trade. Don't take a direct first trade that can hit your stop loss. Always wait. Market should go one side down and give one retracement, then take a trade. But you from S3 to S4, you can take a trade. Same thing for this thing also, R4 breakout yes, also. The market is going from down R3 to R3 to R3, then R4, then if we are giving R4 breakout, so always wait for one retracement. Because the market given a one side rally of this kind of rally, so always market take a small reversal before going ahead. So if you take a trade after one retracement, so that will be perfect trade. Okay, ma'am. Ma'am, please repeat ये retracement का कहाँ पे wait करना? See, in the retracement, I wanted to say that if the market is going like the price is going from here, like आपने आज नीचे से एकदम से जैसे यहाँ पे आया है, the price is going from S3 to R3, then R4 breakout दे रहा है, तो they always wait for the one retracement. Don't go with the single go. Like price is moving from the S3 से एकदम से आपको R3 ब्रेकआउट मिला, फिर R3 ब्रेकआउट के बाद R4 ब्रेकआउट मिला, तो ऑलवेज वेट की प्राइस एक बार नीचे आए, वन रिट्रेसमेंट है, देन you should take a breakout trade. Otherwise, don't take a trade in first. Is that because ये बहुत ज़्यादा रैली हो गई एक साइड में? Is that because the price have already given one side big movement of one sided? So if you are finding that the price is already given a big movement of one sided, so you should wait for the price to give one reversal so that then the price can go. Because always कभी भी जब price movement करता है तो it's never happen कि price will go up and come down, straightly go up. It will go up and then one time come down, then it will go up again. And the same will hold if the price is trending down. I mean R4 से R3 break किया, फिर S3 break किया, तो we should wait for one reversal. मतलब वन साइड जब एकदम आपको लगे कि वन साइडेड मार्केट बहुत अच्छी और बिग रैली दे चुका है, तो यू शुड वेट फॉर द वन रिट्रेसमेंट. और अगर आपको ऐसा भी कोई ट्रेड मिल रहा है कि आपका प्राइस R3 एकदम से S3 से R3 गया, R4 गया और R5 ब्रेकआउट दे रहा है एक वन साइड रैली के बाद, तो what you should wait for one retracement of the market so that the price can go up again. तो अब अगर एक retracement के बाद प्राइस ट्रेड लेंगे, so that will give you a better result. Okay. Ma'am, for like algo trading, like for example, I have activated the alert today in TradingView. So tomorrow morning, I don't need to do anything, right? I don't need to log into. No, the system will take a trade by itself. Okay, ma'am. Okay. You don't need to do anything. मैडम इसके अलावा आपकी कोई ट्रेनिंग है? Pardon? Is there any other training other than this which you take? No, I don't think so. And cloud based algo अगर वो आप सिखाते हैं मैडम? जब होगा अभी cloud based algo जब मैं अपना launch करूंगी तो I will definitely give you a training. Okay, thank you. मैम जो आपने इंडिकेटर आज भेजे हैं उसमें सारी सेटिंग हो रखी है या उसमें चेंज करने पड़ेंगे कुछ? किसमें? तो आज आपने इंडिकेटर भेजा है.
नहीं, उसमें डिफॉल्ट सेटिंग सेम है, आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेंगी. यू हैव टू मेक द सेटिंग एज पर माय आई हैव टॉट यू. Okay. Because I have given you a default indicator. Now you have to do your own work. मैडम आप जो नेरो कैमरिला स्टॉक डेली देते हैं उसमें अगर आल्गो ट्रेडिंग करना होगा तो उसमें टारगेट आप एक कैसे दिन लगाना पहले होगा? सेटिंग करके अलर्ट ऑन करके छोड़ सकते हैं. R5 का टारगेट क्या है? 1 नहीं, R4 से आप इसका 786 टारगेट रख लीजिए. बाय डिफॉल्ट 786 कर दीजिए. उसमें R4 R5 ब्रेकआउट ऑन कर दीजिए. S4 S5 ब्रेकडाउन ऑन कर दीजिए और टारगेट शुड बी 786. और उसका स्टॉप लॉस कैसे रखना होगा? डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द शेयर. जैसे अगर रिलायंस है तो 5 रुपए, अगर आपका 5000 का कोई शेयर है तो 7 रुपए, तो एज पर द प्राइस ऑफ द शेयर. ओके ओके. मैम जो आपका नेक्स्ट वेबिनार है शायद जनवरी में शेड्यूल्ड है वो, तो उसमें हम लोगों को जरूरत है क्या अटेंड, मतलब व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू कवर देयर? इज इट एनी डिफरेंट? नया टॉपिक ऐड नहीं किया है बिकॉज आई एम नॉट. अभी मैंने जो नवंबर में वेबिनार शुरू किया था उसमें आई हैव एडेड दिस एल्गो एंड दिस स्टॉक सेटअप. तो दैट फ्रॉम लास्ट 2 वेबिनार, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, आई एम कवरिंग दैट सेम टॉपिक. बट इफ आई ऐड समथिंग आई लेट यू नो. अभी मैं कुछ ऐड नहीं कर. So you should go ahead with this setup, practice. See, बार-बार वेबिनार अटेंड करने से इतना कोई फायदा नहीं है. Just जितना भी whatever you have learned, just practice it and make yourself perfect in that. That will help you. And I'm always there to help you. I'm always available on the Telegram. So I'm always there to help you. So there won't be. हाँ, मैं वही बोल रहा था कि आपका जो माने बड़ा ग्रुप है वहाँ पे अगर उसका लिंक इस हफ्ते नहीं, इस हफ्ते के बाद में लिंक नहीं दूंगी बिकॉज इस वीक आप लोग एल्गो पे सेटअप करोगे. यू पीपल विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. तो आई जस्ट डोंट वांट बिकॉज उस ग्रुप में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्गो बिकॉज एल्गो इज नॉट एवरीबॉडी इज यूजिंग that group. So I will, this week I will be there in that group. I'm there to help you in that group. So this week just go in that group, and after this week, next week Sunday, I will give you the link of that. I will इस वीक तो 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा एल्गो में समझने के लिए, मैंने पूरा नॉलेज आने के लिए. मैं कह रही हूँ ना, तो I will add you next Monday on that. Okay. I will do that. तो वो ग्रुप तो वैसे भी आपके पास हमेशा ही रहेगा. That group I'm not gonna stake off. That group is always there. I don't know about another trainer, but I just want that कि I just want कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैंने एक बार वेबिनार लिया है, तो I should be touch based. I should be helpful for them the lifelong. मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भैया 1 हफ्ता हो गया, 2 महीने हो गए. I'm always there. So that is should be because ऐसा नहीं होता है कि मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं मई से भी टच में हूँ. मई से मेरे स्टूडेंट्स हैं और they are still with touch with me. They keep on asking me and we have to keep on talking. Ma'am, just one thing, one additional thing I want to ask is these Cambrella levels which get plotted on weekly levels. Do they assist in terms of giving targets for swing positions, positional trades? Yes, you can use it. अगर आप वीकली कर रहे हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैं जब पोजिशनल ट्रेड लेती हूँ किसी भी ट्रेड स्टॉक में, तो आई जनरली प्रेफर supply and demand zone to take a trade to book my target, and otherwise you can go for the weekly Cambrella also. That will also help. The way I set the stop loss as per the price is between this जितना प्राइस है, कितने का वो स्टॉक है. अगर आपका स्टॉक 500 रुपए का, अगर आप उसमें एल्गो ट्रेड लगा रहे हो तो योर स्टॉप लॉस शुड बी 1 or 1 रुपीस और द डिफरेंस. अगर आपका स्टॉक 2000 का है तो दैट शुड बी 5. तो एज पर द प्राइस ऑफ द स्टॉक यू हैव टू पुट योर SL मल्टीप्लायर. How to develop strong trading psychology. Strong trading psychology can be done in the help of your practice, your determination, your hard work. That will help you to get the strong trading psychology. बस
See, I just want to share one thing with you. If you want to be a strong trader, don't get influenced with the profit of other traders. Because I've seen more lots of YouTuber, lots of people who put the profit of lakhs, crore, कोई 1 करोड़ का डालता है, कोई 10 लाख का डालता है, 15 लाख का डालता है. I don't get influenced of that क्योंकि लोगों को क्या लगता है, I'm not against anyone, I'm not against any YouTuber. That's okay if they are putting their profit, that is their own choice. But that people make people feel like making a money in the market is very easy, so we can make the big money with the big capital. Don't think about it. If you have people seen me, I have 3 accounts. I'm making a profit in 3 accounts. मैं कभी भी इन तीनों का नहीं दिखाती हूँ. I always show the profit of my 1 account, and I'm happy that whatever I'm showing, आप लोगों को अगर लग रहा है कि मैम कम कर रही हैं या ये करिए, it's okay. I'm earning. That is best part of me, and you have to be consistent in your trading. अब ये मत सोचो कि वो 1 लाख कमा रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है, मैं तो 1000 भी नहीं कमा पाता हूँ मार्केट में. So that should not be there. You should make your own way. It is a slow process. If the people is earning that much, you don't know how much hard work they have put it, how much effort they are put it, how much years they have given to the stock market. So you have to put your own hard work. So you have to get your own confidence. You have to trust on your setup. जितना ज्यादा अगर आपको बैकअप किसी भी सेटअप पे ट्रस्ट करना है, if you want to trade it any setup, अगर मैंने आपको ट्रेड सेटअप दिखा दिया, मैं आपको उसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट भी दे देती, that is my study. That won't give you a confidence. If you want to be a confidence on any setup, if you want to be trade on any setup, you have to do back testing by own, because जितना ज़्यादा आप उसे back testing करेंगे, the time you will spend the chart, the time you will spend with the setup, that will give you more confidence. That will give you more confidence that yes, this setup can give me a profit, so I should trade with this setup. So always back test by yourself to gain maximum confidence on anything. क्योंकि जो हम अपनी knowledge और अपने back testing से whatever confidence we gain, nobody can give us. I can show you my back test result. I can give you my Excel. अब मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि मैम, if you want to, I want to take your training, but I want to see your profit and loss of last 6 months, then I will take your training. I said, what my profit and loss statement will give you? That is my profit and loss. That is my own way of trading. That is my funda of trading. Will you be able to make that profit if I'll show you my profit and loss? Will that make you a difference? What will make you a difference is what I am teaching you, what knowledge I'm giving you. That will make your difference in your trading style, not my profit and loss. Ma'am, is it necessary to maintain a trading journal? Pardon? Is it necessary to maintain trading journal? Trading zone means? A trading journal. Journal, register. Not to, Yes, it is necessary to maintain your trading journal in the starting, so that अगर आपको कोई loss भी हो रहा है तो in the end of the week, जब आपने पूरा week trade किया, आपके पास अगर trading journal होगा, what will happen? At the end of the week, Saturday, you can review your trading journal. You will understand that where I made a profit, what I did good in that trade, where I made the losses, did I did any mistake in that trade, or it was okay. So trading journal will help you to improve your accuracy. Madam, just one question. This is not a doubt. One trader, I think is a Ghansham trader. He always put that he has made a 25 lakhs profit, 1 crore profit. Is it possible in particularly in Bank Nifty? I don't think. I won't comment. Maximum lot size is defined actually. I won't comment on this. It is possible if you are a consistent trader, but I won't comment on any. I won't. मैम एक क्वेश्चन था. Yes. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज आपने एल्गो ट्रेडिंग बताया, हम लोग को एक इंडिकेटर हमारे पास है, तो आप तो ये श्योरली ये इस इंडिकेटर में और दूसरे इंडिकेटर में काम करोगे, जो फीबो का इंडिकेटर होगा उस पर भी काम करोगे और डिमांड एंड सप्लाई का भी काम करोगे, तो वो तो नया आएगा, तो हम लोगों के पास आएगा क्या वो सब? हाँ, जो भी इंडिकेटर आएगा that will be there with you. So
but there will be a minimum charges of that, but बहुत ज़्यादा charges नहीं होंगे, so there will be a minimum charges, but I will give you that. ये जो इंडिकेटर है ये 3 months के लिए I'm not gonna charge anything from my webinar participant. For next 3 months you can use it free. After 3 months, if you want that you feel like you are profitable with this indicator, you want to continue, then there will be a minimum charges, but वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे. I will let you know. But 3 months में आपका confidence gain हो जाएगा. और जो भी आगे जाके जो भी वो इंडिकेटर्स आएंगे, I will पहली जो मेरी priority होगी मेरे इंडिकेटर्स की, वो always मेरे webinar participants की होगी. थैंक यू। हेलो Yes. हेलो मेरे को पूछना था कि मतलब स्टॉक में ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हम अपनाएं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट आता रहे, चाहे थोड़ा ही आए। ऐसा है कि हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहें, चाहे कम ही रहे। सपोज दैट हमने 50 लाख इन्वेस्टमेंट की और हमें पर मंथ सिर्फ 1 लाख ही आए। तो Sorry, I was not able to understand. Can you repeat it and a little bit slow because वो सारी बातें बहुत जल्दी जल्दी हो गई. हाँ, मैं पूछ रहा था कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, कि हमें मतलब ज्यादा रिटर्न ना मिले लेकिन कंसिस्टेंसी रहे प्रॉफिट में। और एग्जांपल मैंने आपको दिया कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है, तो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ वन थिंग. यू ऑलवेज स्टिक टू योर टारगेट एंड ऑलवेज स्टिक टू योर स्टॉप लॉस. दैट इज द फंडा यू हैव टू फॉलो एंड ट्रस्ट योर सेटअप, नथिंग एल्स. और इसमें कुछ ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा पे अगर हम कम रिटर्न नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ये एक मिथ है कि मार्केट में कि अगर बड़ी कैपिटल है तो दाई भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. अगर आप 20,000 से स्टार्ट करके आप उस 20,000 को प्रोटेक्ट करके अगर आप प्रॉफिट कर सकते हैं, दैट डे पुट योर एक्स्ट्रा कैपिटल. डोंट थिंक अबाउट कि आज मैं अगर 2 लाख या 3 लाख डालूंगा I will be able to make a good profit. You have to, if you can make a profit from 20,000 rupees, if you can protect your 20,000 rupees capital and you can make the profit from 20,000 rupees capital in 1 month, that day think about putting some extra amount. क्योंकि जिस दिन आपने उस 20,000 को बचा लिया, with the day you have made the profit from that 20,000 rupees, that day that will be your first step to a profitable trader. That day think about putting the extra money in your trading account. Okay, one quick question. I was setting up my algo trading thing. So I wanted to just confirm the SL multiplier for Nifty. You said 10 to 15 point. Okay, thank you. Madam, can you suggest any short-term or long-term stocks? कार्तिक इंडिकेटर आई ऑलरेडी शेयर ऑन लास्ट टाइम ओनली. मैंने लास्ट टाइम ही अपने उसमें शेयर कर दिया था ग्रुप में. आई हैव ऑलरेडी शेयर द कार्तिक इंडिकेटर. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट दैट इंडिकेटर. आई हैव शेयर दैट इंडिकेटर इन द ग्रुप. Yeah, excuse me, madam. Can you get any short-term or long-term stocks, madam? Suggestion. Pardon? Any short-term or long-term stocks? See, can find any stocks for the long term. अगर मुझे कोई क्रॉसओवर से स्टॉक्स मिलते हैं, अगर आप भी अगर क्रॉसओवर से सर्च करो, अगर आपको स्टॉक्स मिलते हैं, यू कैन आस्क माय सजेशन दैट ओके आई प्रोवाइड अगेन. अगर आपको लगता है कि आपको क्रॉसओवर पे कोई स्टॉक्स मिल रहे हैं, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, आपको वो अच्छे लगते हैं, तो आप यू कैन आस्क मी. आई विल गिव यू माय सजेशन दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक्स और नॉट. अदरवाइज इफ आई फाइंड एनी स्टॉक गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट आई लेट यू नो. पर यू कैन सर्च द क्रॉसओवर. जो 5 और 20 का क्रॉसओवर है उस पर सर्च करो. जो स्टॉक्स आपके पास आते हैं, जस्ट टेक दैट स्टॉक्स एंड फाइंड इट आउट. अगर वो आपको लगता है कि यार दैट स्टॉक इज गुड एंड यू कैन आस्क मी, आई विल गिव माय सजेशन दैट यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक और यस और नो. ये जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग में वो जो स्टॉक चॉइस करते हैं, उसको अगर डेली का स्टॉक के साथ अगर इंक्लूड करते थे, क्योंकि नहीं मैं नहीं करती हूँ, मैं डेली इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ. वंस इन अ वीक या जब मुझे कोई अच्छा स्टॉक मिलता है तो मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ. बट जब भी मेरे को कोई अच्छा स्टॉक आगे चल के मिलेगा क्रॉसओवर में, मैं जैसे रात को स्टडी मुझे मिलेगा, आई विल डेफिनेटली. मैडम कार्तिक इंडिकेटर में R5 और 6 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो गोस्वामी की जरूरत नहीं है कि वो अलग है? इंक्लूडेड है. ओके. I'll share that indicator again in the group.
So guys, if you are, I think if everything is done, can we end the session here? मैडम फिबोनाची का वीडियो नहीं I'll put that video on the server again because वो delete हो गई है, तो I will definitely put that webinar on server again and I'll ग्रुप में नहीं हो पाएगा मैडम, नहीं चल पाएगा ग्रुप में, चाहे इसमें टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, वो वीडियो इतनी छोटी नहीं है ना, वो जीबीज में वीडियो होती है, वो मेरी वेबिनार्स की वीडियो। तो आई विल पुट दैट गूगल ड्राइव में डाल दीजिए। आई विल पुट दैट गूगल ड्राइव में डाल दीजिए। आई आस्क्ड माय टीम टू पुट द सर्वर, मैंने बात कर ली, वो कह रहे थे कि बाय टुमारो they will put that video on the server and by tomorrow, day after tomorrow you will get the video. गूगल ड्राइव में मिल जाएगा ना मैडम? हाँ, गूगल ड्राइव सेम। ओके, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. I will add to two more things that I am basically a senior citizen. After retirement, I just started 3 months back the option trading. So it is only just wanted to indicate to the all newcomers. I get a message in the your chat box that some people saying they are opening account new, but they were not learner. So at this stage, I am already. Your voice is breaking. So breaking. So I will just suggest everybody that there is no shortcut to success. Only hard work is only the key for everybody to set success. So I'm very happy to impressed with you that at this age you want to start, because mostly what people do is that the people don't take retirement and they take now we will take our life rest and we will enjoy our life. But in this time you want to learn new things, you want to start new things. That's really good. That's really good. Actually, at this point it is 4 at night at Canada. I am just come from my children for 2 months. So I am attending this webinar it is now 4:11 a.m. in the morning. I am attending the whole night here. And you are attending the webinar. You are spending your whole night to attend my webinar. Really great. Even for trading also I have to learn. So I'm just sleeping in the day night for 5 hours. Then again start doing just for learning. That's really great. If you are doing something, that is really impressive. I really have to admire that. I have been taking a lot of course for motivation others in my professional career. I'm basically a chartered accountant, but I didn't believe in stock market because I felt that this market is being dealt by all crooks and other things. But now just I've started with learning it, and after getting to your YouTube channels, I think something is there where you can put your energy and mind. Also write some profitable gesture also. Thank you very much for your webinars. Welcome. So guys, I think we in should. In fact, madam, shall I say? Yeah, sure. I love. Yeah, madam, I was doing trading since last 1 year, but I think after attending your this webinar, I learned one thing, madam. That is discipline. That is. In fact, last week. That is the main thing. That is the only thing which can help you to be a profitable trader if you learn the discipline. Exactly. Same thing, madam. Last week, it was the only last week I made profit. I made 0 loss. No, not a single day I made loss. That is really great. See, I actually too thankful. When I get the feedback, मुझे नहीं पता. Sometimes I get the feedback. People I say that कि I only help my webinar student, but as per me, I never do that. I always help another also, and I feel really great if I can change any one life with my things, that any trader life be profitable, any one person life will change because of one person life will change because of me. So it will be really great. I feel like I'm doing something in my life, because that's why I started this YouTube channel. That's why I started with mentorship, and I'm started the webinar so that I can teach people, I can help people who are to learn something new and to do something. Thank you, madam. So guys, I'll request you one thing. If you can take out the time, little bit time from your schedule, and just give your feedback on Telegram, direct message me or in the group, and whenever you feel comfortable, just a small feedback about my webinar. So I'll feel good. It motivate me. And if you have something which I need to improve in my webinar, you can also share that so that I can take care of the next webinar. So I love to get your feedback on my Telegram. Sure, ma'am. Sure.
सर मैम मुझे तो सिर्फ 4 महीना ही हुआ है ये ट्रेडिंग के अंदर आए हुए, पर मैंने 4 महीने में मैं खुद नहीं बोलूँगा कि 1.5 साल का एक्सपीरियंस गैदर कर लिया है। और पर्टिकुलरली इस वीक में मुझे बहुत मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। पहले तो एक 14,000 का लॉस हो गया था, उसके बाद रिकवरी करके उसको 3,200 समथिंग प्रॉफिट किया दिस फ्राइडे। दैट्स रियली ग्रेट। ये मेरा बहुत अचीवमेंट है, पर 4 महीने में मैंने पिछले कुछ नहीं कोर्स फाइंड किया, एक आध कोर्स किया, एक NSE पे कोर्स किया, पर वहाँ पे ऐसा कोई फेस माने वर्बल कोई कम्युनिकेशन का हुआ है ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ने वो मिहिर कांति चक्रवर्ती, तो हम लोग बंगाली है, तो उसने क्लास किया, तो उसने बोला कि ठीक है भैया आप केबी मैडम का क्लास करो, तो आपके क्लास चला है। तो मैंने he suggested you by class. He also attended my class. हाँ, मिहिर कांति चक्रवर्ती। Okay, I know him. I'm in the touch with him. तो उसने मुझे सजेस्ट किया था। तो काश उसने सजेस्ट किया था, नहीं तो मैं अभी तक अंधेरे में हाथ फैलाते रहता। नहीं तो इतना प्रोमिनेंट नॉलेज कभी मैंने नहीं आया मुझे, और बहुत कम टाइम ही हुआ है मेरा, 6 महीना भी नहीं हुआ है अभी ट्रेडिंग में। That's good. Thanks to you, man. Thanks to you. Welcome. So guys, I'll end up the session because मुझे अभी जाना भी, I have to go somewhere. So you will get the recording of this webinar by tomorrow, जो आज का डे है। मैं सब कल तक आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। Till then you can start setting up the trade. अगर आपका सेटिंग हो जाती है और उसके बाद अगर स्टिल आपको कोई फेसिंग प्रॉब्लम होती है, you can let me know. I'll check on your कई बार लोगों को होती है, just set it and trade tomorrow and let me know if you are facing any problem in the live market. Okay, thank you, ma'am. Thank you, madam. Okay, guys. See you tomorrow in